Hello, welcome to the third episode of The Curious Guy, and today we have Mr. Prateet Mukhia with us, also known as Gray&aiD. So he is into the hip hop field, and was always curious about what happens in the hip hop genre, in the music field, how the music are made, what is the science and the emotions behind the music. So we will be listening to him sing as well, and we are going to get deeper into the hip hop culture, getting to the underground of the community and see what they feel, what are the emotions that they work through, and what is the journey of Mr. Prateet himself, discovering him through depression, discovering himself through a very hard life that he has led. So let's hear it from him directly. Hey, what's up? Welcome to the Curious Guys podcast. That's Piyush with me. तुम लोग मिल ही चुके हो, उसी का podcast है. So what's up, bro? Very nice, very good. So I was under the impression कि मैं आपसे सिर्फ I was gonna talk about just the music part, but since the time you have come and the topics that you have covered, तो मुझे पता है कि अब ये ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होने वाला है. सबसे पहले तो आई एम श्योर कि सब पूछते होंगे ना कि ये ग्रेनेड नाम कहाँ से आया, क्या है बैकग्राउंड इसका? So, when I was younger, I used to play Nintendo. वो जो आता था ना, कैसेट फूक फूक के डालते थे. तो वो था मेरे पास when I was in Visakhapatnam and I was around 2 years old. And वहाँ से I needed a gamer name, right? And I kept my name. I wanted to keep my name something that brings a light or has a empowerment. So I kept my name R-A-Y Ray. बिकॉज उस टाइम पे बेब्लेड भी आता था तो हम लोग बेब्लेड देखते थे एंड देयर वाज R-E-Y रे बट आई वांटेड रे R-A-Y मेड मोर सेंस टू मी बिकॉज इट हैड अ ब्राइटनेस विच इट ब्रॉट टू पीपल अ रे ऑफ लाइट काइंड ऑफ थिंग एंड over time that stuck till at least my 10th standard. In my 11th was the first time I fell in love. And when the girl left after 2.5 years, that girl's part, some part of a person that you love always stays within you. So that had changed me over the course of 2 years. I was a very notorious, angry, idiotic person before that. But that change after she left me made me someone different. I could not identify myself as Ray because till the time I was Ray, it was always me being a completely white person or a completely black person. I couldn't be somewhere in between, mentally, spiritually, or whatever. And after that, I realized that the G from that, changed not only my name, but actually myself as well. Because I was neither of both. I was somewhere in between. Because every person has a good and a bad in them. But when your bad side changes into a person who wants to be good, तुम ब्लैक कलर में कितना भी व्हाइट मिला लो वो कभी व्हाइट नहीं बनेगा, वो हमेशा ग्रे बनता है. That's how grey came. Over time, when I got into, after 2008, my whole journey of, in hip hop and DHH scene, when I got into learning of stuff, that's when I wanted to help people. I want people not to go through what I have gone through. I wanted things to be more accessible or knowledge to be more accessible to them. So I wanted to help them. And help का दूसरा name होता है aid. So I just wrote Gray and I wrote aid and I left it. I didn't know what to do. I was stuck there and one day my friend came over and I had gone to the washroom. When I came back, he drew a hand in between. Just ऐसे ही मस्ती मस्ती में. मैं वापस आया, मैं बोला तू हैंड क्यों ड्रॉ कर दिया? बोलता है ग्रेनेड बना रहा था. मैं बोला ग्रेनेड मतलब ग्रेनेड वाला ग्रेनेड? बोलता है हाँ. एंड आई वाज लाइक मैं तो ग्रेनेड, बोलता है ड्यूल ऑलराउंडर हो गया. मैं बोला अरे भाई ये तो यही तो चाहिए था मेरे को. दैट्स हाउ ग्रेनेड केम इन. So the girl, Yeah, how the way she shifted you. So you said you started your journey in 2008 to music. correct. And when did you decide कि ठीक है अभी इसमें मेरे को aid भी चाहिए, I want to give aid to people? This was when? So, I truly feel a person should not try helping anyone if he has half knowledge. Knowledge is a thing that जिंदगी भर तुम करते रहोगे, but you should have at least a package enough
that can help people at a complete level. आधा आधा इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आधा इन्फॉर्मेशन वो इंसान की जिंदगी आधे आधे में छोड़ भी सकता है या तो उसको भटका भी सकता है. एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने म्यूजिक नहीं रिलीज किया था सिंस 2014. I released my first track in 2015 or something, and since 2008, I have been prior to 2008, I have been a hip hop dancer. In 2008, I continued hip hop dancing. Then I got into DJing. Then when I got into DJing, someone had misguided me because I wanted to create music from scratch, because the music, the frequency, I don't know, I have a very deep connection with it. And it's like meditation for me, which people are not able to understand. For people, music is just like party, banger, ye wo. But it's about the frequencies, it's about how, everything in the world has its own frequency and vibrates on it. And people need to see it that way. That I think I'm stuck in the shoes of Nikola Tesla, not being at that high, but I'm in the same dilemma. When he's born in the wrong time, when people don't have that knowledge, whatever he's saying is utter nonsense for them, but I think it'll make sense way later. So, and over that time, the journey that I've had, I learned my music theory, my production. I have learned so much, but मैंने एक कभी डिग्री नहीं लिया. मैंने literally सिर्फ knowledge लिया है. The moment I thought this is the max I can get out of it, I didn't waste time. I skipped on to the next thing that I wanted to go in deeper learning and stuff. And till then YouTube and everything had come. So I got resources from worldwide to research, find out and all. That's when I started adding them to my playlist. Over time, there was so much that I realized that a person can sit at home if he's passionate enough, do his whole sound engineering, whole theory, everything that he wants to do just at home. And nowadays, the field is in such a way wherein it doesn't matter what degree you hold. If you can't do what you hold, it doesn't matter. So you need to be good at what you do if you're passionate about it or not. साउंड वाले इतने लोग एवरी ईयर पास आउट होते, नो वन गेट्स अ जॉब बिकॉज हाफ ऑफ देम जस्ट लर्न इट कि हम लोग करेंगे हो जाएगा, बट नॉट एवरीवन इज गुड एट इट. आई सॉ योर यूट्यूब चैनल जहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट है कि लर्न विद ग्रेनेड. सो वही मैं सोचा कि ये, बट आई प्लेड, मेरे को लगा मे बी यू वुड हैव अपलोडेड योर कंटेंट कि भाई ऐसे ऐसे बनाओ म्यूजिक या जो भी वट एवर. बट देन आई सॉ एंड आई केप्ट स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड देखा कि ओ दिस इज जस्ट फॉर समबडी हु जस्ट वांट्स टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. मतलब किसी मेरे जैसा आदमी जिसको बस समझना है कि यार ये म्यूजिक में क्या होता है, तो वो वहां से वो आराम से सीख सकता है. सो दैट मेड मी क्वेश्चन कि यार जनरली अभी अभी अरिजीत सिंह बैठ के किसी को गाना गाना नहीं सिखाता है. फैक्ट्स. और लता मंगेशकर नहीं सिखाएगी या कोई भी नहीं सिखाता है. सो व्हाई इज द नेसेसिटी? मतलब आई एम अ 90s kid. ठीक है, and as a 90s, I don't know about the other generation nowadays, I don't see it that much happening, but as a 90s kid, you always had भैया with you. कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भैया मिल जाता था. एंड फर्स्ट टाइम वी लर्न हाउ टू टोरेंट. कोई ना कोई किसी का भाई रहता था, भैया भैया गेम डाउनलोड कैसे करते सिखाओ ना. तो ऑल दिस एंड वी ऑलवेज हैड समवन टू गाइड अस. तो कहीं कोई गलत गाइड कर रहा है तो चार और भैया आ जाएंगे, अरे तू क्या कर रहा है, गलत सिखा रहा है. सो ये सीन है. एंड आई डोंट नो, आई लव्ड एंड अडोर्ड दैट फीलिंग that everyone should have this kind of person, and not everyone is lucky enough to have that person. And honestly, I feel like, I have this belief that when a person feels like he's useless if he doesn't stand for anything or is not able to be beneficial to anyone in his life, then people normally get suicidal thoughts and stuff. But I feel, why do that? That's just a waste of life. Rather you service your life in other people's service so that they can learn or they can grow. Maybe what you can't do will make them do something that you can't even imagine. And it's not about how they think about you, what they learn from you and all. It's not about any benefit that comes out of it. It's just that if 1,000 people are listening to you, it doesn't matter if 10 people or 20 people do it. Even if one person's life is made out of it, it's not about what they will have. It's about the satisfaction and the happiness that you get. That's that. So your music journey
how did you decide? I hear your father also is in the same segment of Yeah. thing. So was it influenced by him or कैसे था वो? कैसे start हुआ? So, And what age were you? my father had left his house at around 2022, wherein he had a bright future in front of him, but he left everything because he wanted to be a rock metal singer. Then he started doing playbacks for Bollywood also. He tried a couple of times, but that time the stakes were too high, and I always adored him for the passion that he had, and my father's never been कि नहीं तू ये कर नहीं तू वो कर. The moment I felt like यार मैं पढ़ के क्या करूँगा, मेरे को जॉब नहीं करने का है, and I would rather learn a skill and utilize that skill. I don't want to do this. It's just a waste of time. So he supported me in that. He's like, if you don't want to study after your 12th, it's fine, don't. Right? And he supported me throughout the things, even though if he didn't agree to it, right? He saw me going through things and stuff. Music was something that my father always told me that tu music karega. And I was like, man, music nahi kar raha. I'm not. This is what age? This was around at 11, 12. Okay, I was learning a lot. I had a lot of experience of music, and I was always there. School में annual day होता था, कुछ होता था. I was the person mixing the tracks and everything. So virtual DJ से start किया, तो वो काफी एक journey रहा है. But I never thought that I'll be a musician. I was always like, हाँ मैं back of I'll be behind the cameras and stuff. And I started working in events. I saw how life is. I took a almost 8-year journey, not trying to do music and only doing a job or something. I don't know. Over time, every year, I just felt detached from my soul. I felt like this is not who I am. This is not, I can't feel myself anymore. And the moment I feel that, it was always a headphone or a earphone in my ears or a speaker playing. एंड इवन मेरे पास अगर हेडफोन ईयरफोन नहीं होते थे, वो नोकिया का छोटा वाला फोन आता था, वो कान पे लगा के बर्तन धोते रहता था. सो या, सो इट वाज ऑलवेज समथिंग दैट गॉट मी बैक टू माई सेल्फ. One day, I think in 2016 or 17 or something, I had come down from Mumbai to Bangalore because there were some issues in my family. They were not keeping well or something. So I thought, why not? I came down and dad was doing this event of Raftar. And Raftar Paji is a beautiful human, right? And he's very humble, down to earth. But I'm not a big fan of his crew, okay? The Kalamkar gang. A few people I love, but I'm not a fan of most of them. When I entered that stage, मैं ना वहाँ पे I was standing near the entrance कि स्टेज पे कोई चढ़ ना जाए, एंड जितने लोग को आना था वो लोग आए, एंड दे वो डूइंग देयर थिंग ऑन द स्टेज, एंड आई वाज बिहाइंड नियर द स्टेप्स, एंड आई वाज हैविंग फन बिकॉज मैं रफ्तार के काफी गाने सुनता था उस टाइम पे, एंड आई वाज जस्ट ब्लास्टिंग ऑफ, एंड आई न्यू द लिरिक्स, आई वाज सिंगिंग अलोंग एंड स्टफ. आई वाज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ. Eventually, I had one of the rappers from his crew, that is Harjas Harjai, who came up to me, and I didn't recognize him. And he said, bro, are you like, what are you? Are you a dancer? Are you a rapper? I'm like, yeah, I'm a dancer. I write, but I don't rap. If you want, I have my books, 3-4 किताब भर के है, मैं आपको देता हूँ, आप गा लो मेरे लिए, मेरे lyrics आप गा लो. And that's when he said something to me which I had heard before, but I never understood. That's when it hit me. He said, अगर तूने जो लिखा है वो तेरी कहानी है, जब तेरी कहानी तेरे को ही नहीं बतानी तो मैं क्यों बताऊं? And that hurt me. That hurt me at a not emotional level, but a psychological level. The whole way while my work was going on, while was going back home, while I went back to Mumbai, throughout these months, I just sat and I questioned myself कि मैं क्या कर रहा हूँ? बात तो सही बोला उसने. And it's my life, my story. If I cannot convey my pain or my story or my experiences through my words, why would anyone else do it? They have their own thing to do. And it's rap. It's not, rap in India is just coming up. It's not at that level wherein, lyrics किसी और के लिखे हुए तुम गा लो. वो भाई commercial scene में होता है. But it's very disrespectful in hip hop scenes. It's not completely, no one respects that if that's happening.
So if someone knows that you're an artist who does that, they would not prefer to collab with you or something. So that's that. And I thought about it. I didn't know how to rap. And I had failed in so many things in my life. At that time, it was just failures. Today, it has converted, those failures have converted into experience. And I'm happy that I failed that many times because it's no longer something that I was bad at. It's something that I learned from, and all of that, which was useless at that point in life, where I was just failing and failing and failing back to back. Today, all of that together has made Gray&aiD what he is. And I'm happy for that. I've learned from all of it. And now, throughout the journey, it has been wherein when I went back to Mumbai, I was staying alone. And that one dialogue stuck with me so bad. I was like, you know what? I'm not going to waste my time if I can't do this. I'm giving myself 6 months. In 6 months, मैं थोड़ा हूँ, मेरे को थोड़ा कीड़ा है, तो या तो मैं एकदम फाड़ूंगा या तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा. तो आई चैलेंज माई सेल्फ, मेरा खुद से प्रॉमिस है. And I said, within 6 months, I'll either become the best freestyler in whole of India. Otherwise, I just don't want to do this. I don't want to disrespect something or go into something half-half. Over the first month, second month, I was trying my level best. But थोड़ा demotivation आ गया था because नहीं हो रहा था, वो आ ही नहीं रहा था. आई वॉज एट अ वेरी बेसिक लेवल और 2 महीने से कर रहा हूँ यार, अभी क्यों नहीं आ रहा है मेरे को. देन आई हैड अ सिस्टम दैट आई अंडरस्टूड दिस विल वर्क. आई एम गुड विथ पैटर्न्स. सो इफ आई सी अ प्रॉब्लम, मेरे को उसका पैटर्न दिख जाता है सॉल्व करने के लिए. सो मेरे को पजल खेलना अच्छा लगता है लाइफ के साथ. सो आई लर्न दैट पैटर्न एंड आई प्रैक्टिस इट. द थर्ड मंथ, जो 2 महीने में नहीं हो रहा था, वो 2 महीने का एक साथ पूरा थर्ड मंथ में आया. And I can feel goosebumps right now all over my body because of that. Because that feeling that came to me, the pain inside, the irritation in my head, it just vanished. When I was there in that zone, spitting, I didn't give a rat's ass who's listening. मैं बर्तन धो रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ, हेडफोन कान में, मैं बस फ्रीस्टाइल किए जा रहा हूँ. And I didn't understand the value of it. One day it was my friends who came. This was the most hilarious story because we were like 4 people. One of the guy was a sound engineer, तो उसने पूरा सेटअप किया और सब लोग, घर की पार्टी चल रही थी, सब दारू पी रहे थे, ठीक है, पी के बकचोदिया चालू है. एंड दिस गाय सेट्स अप अ माइक एंड आई डिडंट हैव अ स्टैंड और एनीथिंग. मेरे पास हार्डली कोई इक्विपमेंट थे. तो वो माइक लेके आया, उसे ना दरवाजे के पीछे ऐसे हैंगर वैंगर पे लटका के माइक रखा, बोला हिलाना नहीं पर तू दरवाजे के पीछे ऐसे खड़े रहे यहाँ. एंड दैट बिकेम लाइक अ फन जोन. सो ये लाइक हाँ ठीक है कर लेंगे मस्ती. तो बीट बज रही है एंड आई एम जस्ट फ्री स्टाइलिंग. करते 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 वी स्टार्टेड ऑफ एट 7 in the evening. It turned into 12 of next morning. And I was like, क्या बात कर रहे हैं, खत्म करने का है क्या, मैं और जा सकता है. एंड ही इज लाइक ब्रो 22 घंटे होने आ रहे हैं, क्या कर रहे है तू. आई वाज लाइक हाँ क्या, मतलब पता ही नहीं चला रे, ऐसा लगा 3-4 गाने गए खाली. बट दैट मेड मी रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग. And that's when I knew that no, now I know my thing. Now I want to help people. I want to go through my journey. I want to build my journey. But why walk alone when I can, help other people on the road and I can pick everyone together? I would rather finish the finish line with 10 people beside me who I can trust and who I can love and adore and who do the same for me rather than just walking alone through the finish line. Yeah, so people, when we listen, even in the songs, underground का mention होता है. Right. या फिर किसी भी podcast interviews में people say कि underground में ये बात चल रही है. So when they say underground, what is the reference? किस चीज़ को refer कर रहे हैं? To understand that, you need to understand my motto. My motto is hustle, create, celebrate. No artist is just born suddenly a big artist. Everyone has gone through their own hustles, no matter at which privileged spoon they are or not. Okay? And when you're an artist who's hustling from the scratch, it takes you time. It takes you time, it takes you effort, it takes you years to understand what you're doing, to become better, to gain your contacts, all of it, right? And underground is it's I won't say it's like an industry, it's like an emotion. Because when you talk about rap ciphers,
अगर मैं अभी रास्ते पे उतर के 4 बंदों के साथ सिर्फ रैप करने लगूं, I will guarantee you within 5 to 10 minutes there'll be at least 15-20 people surrounded us. That's the power of music. And when it comes to a lyricism thing which you're saying, or a message that you want to actually give, which actually carries some weight, then people will listen. When you have something worth telling, people will make sure that it's worth listening to. Underground is nothing but those people who are passionate, who are hungry for that hustle, for just not fame, but just to do it, because it makes them feel a certain way, or they want to just get it out. You know, that process, you will always hear when you talk about underground music, you'll always hear hardcore, chopper flows, or what do you call, rapid fire kind of flow, or you'll end up listening something very lyrical or very poetic and slow but poetic and stuff, all that kind of stuff. You can't do that thing on commercial base. कमर्शियल वाले लोग लेंगे ही नहीं. उन लोग पहले ही बोलते हैं कि नहीं जो यार, बिकेगा वही लेंगे बस. हाँ, हमको कुछ बैंगर दो, कुछ ऐसा दो जो पब्लिक के मुंह पे चिपक जाए, जो नाचे. यार, दैट इज नॉट व्हाट रैप इज. हम वो क्यों करें जिसमें वो, एंड सम पीपल आर लाइक यार, बट इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इससे हमको ग्रोथ मिल रहा है, फेम मिल रहा है, व्हाई नॉट. एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड बैड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. दैट्स आल्सो, हाँ ठीक है भाई, सही है वो. तो अंडरग्राउंड इज बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि वो लोग जो अभी भी इन द जहां वो क्रिएट हो रहे हैं, राइट, अभी एक इंडस्ट्री है, उसके नीचे जो लोग बन रहे हैं, Right. आगे अगले 10 साल में जो आएंगे लोग, करेक्ट, वो वहां पे अभी सिचुएटेड है, एंड दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ, दे आर लर्निंग, एवरीबडी इज टुगेदर, एवरीबडी इज कनेक्टेड. दैट इज व्हाट व्हेन दे से अंडरग्राउंड मींस. Correct. ये लोग जो अभी ऊपर नहीं है, यू गाइज आर पीपल हु हैव पिक्ड अप द वो अंडरग्राउंड का जो फ्लोर है, उससे ऊपर निकल के आप लोगों ने देख लिया. एंड देयर आर मेनी पीपल जो अभी भी नीचे हैं, वो स्टिल वर्किंग इन देयर ऑन देयर क्राफ्ट, या फिर उनको फेमस ही नहीं होना है. ट्रू. They just want to get all the feeling out through Perfect. some artistic way, whatever possible. What people don't understand is they kind of think that, okay, now Raftar, Badshah are commercial, so they are not underground. Bro, they have also hustled. They have hustled prior to Mafia Mundir. They created Mafia Mundir. So वो लोग है, वो लोग तोप है, ठीक है. But उन लोगों का जो जर्नी रहा है ना, you are only seeing what they have accomplished. You are not seeing what they had to go through, ठीक है. And in that scene, now that the person is at a certain height and he has to do certain things for his career and for other people who he supports, doesn't mean he's not a part of the underground. Yeah, he might not be in that hustling phase, but underground is like an emotion. No matter where you go, it'll always stay within you. That's always there. So one more thing you mentioned on the initial discussion was IHH and DHH. Yeah. So I assumed it as a very basic person कि या तो इंडियन हिप हॉप होगा एंड देसी हिप हॉप होगा. Yeah, that's it. करेक्ट नो. That's it. एंड देन यू सेड कि ये कल्चर जो है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर ऑफ रैप. True. मतलब एमिनम की बात अलग है और ये हम लोग जो यहाँ करें, दैट इज डिफरेंट. True. टेल मी द डिफरेंस. When I say hip hop stands for the voice for the voiceless, that is universal. ओके. Okay, that stands for every part of hip hop throughout the world. When it started abroad, it started from a culture of suppressed people who were going through a lot of trauma by the society, who wanted to come up and have a voice. If they're trying to get a voice, they're either being shot dead, tortured, or something or the other, right? Music was one way wherein they didn't have a limitation. They could say whatever they want. Eventually they fell into problems with that also. But today, जो हम लोग खोल के गानों में कुछ भी बोलते हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे उन लोग सफर किए थे वो सब. They stood up for that. They had their own hustle in that, right? When you look at English as a language, it's a singular language. When I say singular, it doesn't mean it doesn't have other languages involved in it. What I mean is, if I say one word, that one word, no matter throughout time, that has kept evolving, has always meant the same thing. Like if I say love, okay, to describe love throughout an English language will always be a singular word. But if you have to describe the same thing in IHH scene, you have so many languages in India.
so many religions, so many ways to perceive it. You have a specific word for a specific kind of love. The love that you have with your dog, the love that you have with your dad, the love that you have with your parents and siblings. Different kinds of love have different kinds of words in India. So you can't end up seeing things from one perspective like a horse. You need to broaden your perspective. When it comes to the Hindi language, see, I would say this whole thing is like a tree. Okay. If English is the stem, Hindi is like the roots. Okay. You have many more syllables, though it sounds like you're saying lesser things, but if you break them down, English language is fastest rap and Hindi language is fastest rap. Put them together, break down the syllables. You'll come to know there are many more syllables in Hindi. People in the commercial field have a notion wherein if you put something something henna, then you have to rhyme it in the next sentence with ghena, pena, lena, So that is something that is there, but it's not necessary. Okay, if the Hindi language will restrict you at a certain point, if you want to explore it till the maximum potential, एवेंजर्स देखा है, ठीक है, एवेंजर्स में जो इन्फिनिटी स्टोन्स है, ठीक है, दे यूज ईच इन्फिनिटी स्टोन इन सर्टन फॉर्म्स, लाइक थॉर का हैमर हो गया, जो भी हो गया, बट व्हेन यू ब्रेक दैट एंड यू गेट ओनली द स्टोन, it can create something at a massive level, right? Similar thing is with Hindi. Hindi is not a singular language. It is a bhelpuri, जिसके अंदर संस्कृत, उर्दू, इतने सारे लैंग्वेजेस घुसेड़ के रखे. ओवर टाइम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया स्पीक्स डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदी. ठीक है, कन्नड़ा वाला हिंदी अलग है, मुंबई वाला हिंदी अलग है, पुणे वाला हिंदी अलग है, दिल्ली वाला अलग है. सो यू हैव डिफरेंट कल्चर्स and everyone wants to represent their culture in their way, which is not wrong. Okay, now the point is, when you talk about Hindi as a language, the more languages you know of your own country, if you know Punjabi and Hindi, you can come up with so much more in your rhyming scheme, or the way you can turn it. You don't have to rhyme it with the rhyming words. You can rhyme it with anything you want. If you know more than 5 languages, you become a very good lyricist because you understand how the structure works, how the lyricism works. That's one thing. Again, talking about this, I want to clear one thing which a lot of people get confused with between the IHH, DHH and abroad hip hop scene, is people keep fighting between Delhi and Mumbai and other places too. They don't understand a basic, simple, how hard is it to get this? Delhi hip hop, when it comes up, we all have heard Lil Wayne, Eminem, Snoop Dogg, XXX Tentacion, and all bigger artists that have, made our lives more important when it comes to rap, because that's where they all start learning from, right? And Mumbai scenes is little different. Mumbai scenes is not like, yeah, people are inspired, but we are not doing what they are doing. We are creating something that is originally from the streets, because what happens is, when I personally am from Mumbai, so जब धारावी का सीन था वैसा, ठीक है, मतलब लोग कुछ साल पहले तक, मतलब कितना 5-6 साल हो गए, 6 साल 7 साल पहले तक किसी को पूछते धारावी का सीन, people would not even talk, they would even be scared about talking about it, because आजू बाजू कोई मिल गया जिसको, जो धारावी से है, या अगर कुछ सीन हो गया, तो it would end up in a very drastic scenario which no one wanted to be a part in. But everyone knew one thing, that धारावी is like वो सोने की लंका टाइप है. You will get the best of the best things over there, whether it is materialistic things, whether it is art, whether it is anything you want in the world, you'll get it there, you'll get it the best. And over time, there was a lot of bloodshed, a lot of violence, a lot of robberies that were happening there. So when you grow up with that thing day in day out, and then suddenly someone comes and teaches you about hip hop, about expressing yourself, about art, and as a young guy, or as a guy who has been through all of this, you are also like, यार बहुत हो गया है, मेरे को कुछ शांति चाहिए थोड़ा.
you also start exploring it. आज के दिन में अगर धारावी में कुछ सीन होता है, it's always sorted out in some artistic way. You have beatbox battles, proper b-boy battles, you have rap battles. There are multiple ways to do that. And hats off and shout out to Mumbai Finest and Mumbai Finine, because they were the people who started Dharavi hip hop thing. And there are a lot of people behind it. अब सबको shout out नहीं दे सकते, but समझ जाओ भाई लोग, जो लोग involved थे. And I think that's how it is. So now when people in Mumbai want to express, there are people who express themselves lyrically, but that is a short percentage. Most of Mumbai, most of Pune will express themselves not like how the world wants them to, show themselves, or how the world wants to hear them. They would normally perform what they talk like, what they feel like. It's more about feel, vibe, emotions, that kind of stuff. Wherein if the same thing has to be done via Delhiites or other people from different states, they would normally go for something lyrical, something poetic, something different genres within rap. People don't understand in the field right now that rap is not a genre, it is a mega genre. There are sub genres within it. There's poetic rap, comedic rap, you have street rap, you have funky rap, you have uptown rap. There are so many. You have trap, you have drill, so many genres. Like, अब बैठूंगा गिरने तो genres कम पड़ जाएंगे. And there are so many more genres abroad which haven't even entered Indian market right now, because Indians are not ready to understand it. To understand rap, you need to be knowledgeable, and you need to have that patience and time to sit down, listen to an artist, break down his lyrics, understand what he is saying. If you can't do that, and if you don't have that much time, you're obviously not going to like it. And yeah, I would agree, rap is not something that everyone would like, but one part of it, there has to be a genre that you love. And rap has all of the genres. You select your genre, hear those artists. It's not about hearing all the artists. It's not about saying I don't like rap. It's about trying to learn about what other people are going through or what they stand for. Yeah, I know if you have like 10 apples, one apple will be थोड़ा सड़ा हुआ, होता है वो, ठीक है, तो हर फील्ड में होता है. And when you have artists like Raftar, Badshah, Emiway, Divine, you have all these artists. At the other hand, you also have artists in the field who just want to make songs about मैंने ये किया, हम लोग इतने पटेल है, हम लोग के पास गाड़ी है, दारू है, लड़की है, पैसा है, जबकि कुछ नहीं रहता है. And that is, very disrespectful, which they don't understand. And that's, I think, one of the major reasons I came up with learning with Gray&aiD. Because, for example, you're into the health food industry. If someone comes and makes something in front of you which is very horrible, like ये खाने से कोई मर जाएगा, ठीक है, like eventually, तो will you not try to explain it to him? You will, right? Because it's hurtful to you. Like, यार क्या कर रहा है, ठीक है, हम हेल्दी बना रहे, तू लोगों को मरवा रहे हो. So that's the scene. So over time, I guess it's just my responsibility in time to explain why things should happen or why things shouldn't happen or how it should. देखो, हम लोग का काम है घोड़े को पानी के पास लेके जाना. पानी पीना है, नहीं पीना है, वो उसको पीना है. हाँ, वो सीन है. You mentioned Dharavi. I am not aware. Okay. Like कि क्या था, क्या मतलब, what were you referring to? So in short, you must have heard about Daud, right? Daud used to stay in Dharavi, and when Daud and all the elite gangsters of that time were there, Dharavi was known. Dharavi was known for a lot of things, which I don't want to specify now, because honestly, it doesn't matter. यार, वो सोने की लंका थी. रावण को देख के क्यों मजे ले रहे हो, जबकि तुम सोना देख सकते हो. और देखो उसमें से धारावी ने दुनिया को क्या क्या दिया है. ऐसे ऐसे आर्टिस्ट निकले, ऐसी ऐसी आर्ट निकली है. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट हैज कम आउट फ्रॉम देयर थ्रू आउट इंडिया. एंड
If you can give example, that will be. As of now, I don't have any specific examples on there, but the most recent one everyone knows is Divine. Oh, Divine is from Dharavi. Yeah, Divine, Emiway, the whole crowd, and these people used to hang around together. And Mumbai Finest and Mumbai Finine was a group wherein you can see Shakespeare, you can see Decipher. All of them, somehow or the other, are connected to that circle. And hip hop is a circle wherein, honestly, no one gives a shit where you're from. Yeah, you represent that place, good. But if you have formed some place, that doesn't mean anything if you can't represent it right. And if there are 10 people from one place, there might be few people who represent it very uniquely, few people that want to do it differently, few people who think none of these people are doing it right. But they understand that all of them are artists and पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है. कुछ खाने के लिए होती है, कुछ उंगली करने के लिए होती है दोस्तों को, तो है अलग अलग सीन्स है. The problem with people, I think, as you said, कि रैप को जो इन्होंने एक सेपरेट जॉनरा बना दिया कि भाई या तो रैप पसंद है लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल जो गाने सुनते हैं बट रैप बोल के नहीं, आ रैप नहीं पसंद. सो आई एम समबडी हु लाइक्स रैप. सो फॉर एग्जांपल डिवाइन के कुछ गाने हैं जो इफ आई एम लो आई लिसन टू देम. ओके 359, ओके देन यू हैव काम 25 है. हाँ दो सॉन्ग्स इतना जो एनर्जी है ना उसमें, हाँ, इट रिवाइव्स यू बैक. हाँ कि ठीक है यार करते हैं, इट पिक्स मी अप. राइट. लेकिन अगेन कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे, जैसे यू जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ द बोहेमियन, एक तेरा प्यार. दैट वाज व्हेन आई वाज आई थिंक 6-7 क्लास में था, तब आया था वो. एंड उसके बाद आई थिंक मैंने सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब वापस लग रहा है कि उसके पास जाना है, वहाँ वो गाना वापस सुनना है. तो या आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर एवरी कैटेगरी फर्स्ट एंड देन से कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल माय पार्टनर चांदनी, शी लाइक्स किंग्स रैप. किंग का म्यूजिक, उसमें थोड़ा रैप होता है, थोड़ा रोमांस होता है, थोड़ा मिक्स एंड मैच है, तो शी लाइक्स इट. बट नाउ शी कैन नॉट से कि आई डोंट लाइक रैप. शी कैन से कि ये जॉनरा मुझे पसंद है. राइट. सो आई थिंक या पीपल शुड एक्सप्लोर इट, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बाकी सारे गाने कुछ भी कर ले, लेकिन जो जो फील रैप में है ना, जो सच्चाई रैप में वो बता देता है ना मुंह पे, उससे पीपल शुड स्टार्ट कनेक्टिंग. आई थिंक इसीलिए रैप बढ़ रहा है इंडिया में. आई कैन सी इट ग्रो. आई कैन, मतलब उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे अरिजीत सिंह आ रहा है, लेकिन यू सी एवरी न्यू मूवी, इवन मूवी प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर्स, दे वांट टू ब्रिंग इन एटलीस्ट 2 लाइंस ऑफ रैप, ताकि ये वाला ऑडियंस आ जाए हमारे पास. सो दैट इज ग्रोइंग. अभी व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर? सी विल इट ग्रो एज लाइक एमिनम वाला लेवल जा सकता है इंडिया में? ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई रैप इज ग्रोइंग नाउ. हनी सिंह भी आए थे, हाँ, रफ्तार पाजी भी आए थे, बादशाह पाजी भी थे, a lot of people were there. There is a reason why they hustled and made it there, and why throughout that point it didn't boom up. It is now that it's booming up. जितना हनी सिंह के टाइम पे बूम अप हुआ था, उससे ज्यादा कृष्णा और एमईवे के डिस्क के टाइम पे बूम अप हुआ है. कृष्णा, एमईवे और रफ्तार के डिस्क के टाइम पे हुआ है. बिकॉज पीपल आर फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो टिकटॉक वाला फेज आया था, ठीक है, हम लोग यार इंडियंस है, हम लोग का यहाँ पे सेपरेट इंडस्ट्री नहीं है. साउंड का अलग नहीं, हम लोग का एक ही इंडस्ट्री था, बॉलीवुड. सब कुछ साथ में आया है हम लोग को. अभी ये जेनजी वाले लोगों को सब कुछ साथ में मिल रहा है, जो वैल्यू नहीं कर रहे इन चीजों का. 90s वालों को वैल्यू मालूम है भाई इस चीज का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग, मी एंड चांदनी, वी वर टॉकिंग जस्ट फ्यू डेज बैक कि यार पहले इफ यू हैड टू बी फेमस, यू हैड टू बी अ क्रिकेटर और अ मूवी स्टार. ट्रू. अभी तुम एंटरप्रेन्योर बन के फेमस हो सकते हो. ट्रू. अब कुछ भी करके यू कैन बी फेमस. तुम्हारे पास वो प्लेटफॉर्म है. हमारे पास अगर अभी कोई 12 साल 13 साल का बच्चा फेमस है, इज बिकॉज ही हैज द प्लेटफॉर्म. हमारे टाइम पे क्या था? कुछ भी नहीं, जीरो. जब अब हम बड़े हो गए हैं, 26 साल के हो गए, तो कोई हमें देखेगा नहीं. फैक्ट्स भाई. सीन ये है कि एवरी पर्सन who was born in the 90s or 2000s always wanted to be शाहरुख खान doing this, you know. हर बंदे का एक फोटो तो है ये करते हुए, ठीक है. हाँ, तो हर बंदे ने किया है, हर बंदे ने कभी ना कभी किया है. So the point is, over time when TikTok came in, people just got that opportunity कि यार
we can be our own movie stars. That's why when you watch abroad TikToks, you have so much creativity. You watch our TikToks, people are crying and पीछे म्यूजिक बज रहा है, कुछ भी चल रहा है, एंड मेरे को नहीं पसंद है भाई. मैं अब्रॉड का एक बार देख लूंगा, ये नहीं होता है मेरे से. TikTok तो I could never do it. मतलब Then- it is cringe Yeah, content. क्योंकि यहाँ चलता है. Exactly. And then came series, Netflix with their series, Amazon and all. And the pattern of they using content. Bollywood में तुम कोई भी content दो ना, they don't make use of good content. They will screw up the content and put it wherever they feel it fits, which never fits. ठीक है? And they'll put it, and अब दोनों खराब हो गया है. अब पिक्चर भी खराब है, गाना भी खराब है. क्या करेगा आदमी? And you need to give that artist that freedom to give you what the artist feels that deserves, right? When Netflix and these people make it, yeah, उसमें भी रहता है थोड़ा, but इतना नहीं रहता है. End of the day, आर्टिस्ट को पता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो सही साउंड करेगा, ये पार्ट में इधर सही रहेगा. And Netflix and all these places also, they put it in a right way, और the 1 मिनट डालते हैं, Exactly. 30 सेकंड डालते हैं, उसका Exactly. अलग गाना है जो आपको Spotify पे मिल जाएगा. ये नहीं कि पूरी मूवी में 40 मिनट का खाली गाना ही है, जब जोड़ोगे तो. I swear, and that's the best part of it. That gives you that vibe. तो तुमको पता है कोई गुंडा जा रहा है किसी को मारने के लिए, पीछे ये म्यूजिक बज रहा है, 30 सेकंड ब्रो काफी है, वाइब आ गई है, समझ में आ गया तू कहाँ है. वो डांस करने लगेगा सडनली तो कैसा लगेगा? ये बहुत that just screws up the whole vibe, and because of that, now if you see the rap scene that is growing, every person wants to talk what their story is, because देखो इंडिया में इतना हसल है, हर घर में हसल है भाई. एंड 90s के बच्चे तो पिटते थे घर पे, अभी 2000 वाले तो उतने पिट भी नहीं रहे भाई. मतलब वो लोग पिट रहे, उतना नहीं पिट रहे जितना हम लोग पिटते थे. ठीक है. एंड हम ग्रज भी नहीं रखते थे पिटने के बाद. हाँ. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि स्कूल में मैं भी बहुत मार खाया हूँ, मुर्गा भी बनाऊं, सब कुछ हुआ है. बट वेन आई, अभी इसको कैपिटल पनिशमेंट्स बोलते हैं ना, कि ये तुम मार नहीं सकते किसी को. कैपिटल पनिशमेंट वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट मार नहीं सकते हो तुम बच्चों को. मैंने कहा तुम इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो मार कुटाई को? मारोगे नहीं तो सुधरेगा कैसे? उसको कैसे पता चलेगा? फिर कोई भी छू देगा रोड पे जाते फिरते, वो लेट जाएगा वहीं पे कि नहीं भाई मेरे को तो कोई नहीं मारा आज तक, ये कैसे मार के चले गए? अरे No, I mean, I completely agree with that point. And now, see, in India, there is a segregation as of now. There is a segregation between artists who have become accomplished. They are collaborating with abroad artists. And देखो सीधा मार्केटिंग का गेम है. ठीक है, अब्रॉड आर्टिस्ट जक मारा के काम करेंगे इंडियन आर्टिस्ट के साथ में जो बड़े लेवल पे. क्यों नहीं? क्योंकि भाई उनको क्या चाहिए? उनको नंबर्स चाहिए. नंबर उन्होंने अब्रॉड से वैसे भी पूरे ले लिए. इंडिया में इतनी पब्लिक है, आधे से ज्यादा फैन है, और अगर एक इंडियन आर्टिस्ट तुम्हारे साथ कोलैब कर रहा है तो दोनों के बढ़ रहे. द अब्रॉड आर्टिस्ट के लोग जो पैसा खर्चा करते हैं, दे आर गेटिंग टू नो इंडियन आर्टिस्ट. इंडिया में जो ऑडियंस है, दे आर गेटिंग टू नो समवन न्यू. Maybe today if someone जैसे रस से a lot of people are inspired. I love Russ's songs, and I didn't know about Russ till the time I heard Emiway talking about it in a podcast or an interview somewhere, and I understood his journey, and I respect his journey a lot, because I understand when you're a person from a field wherein the rest of the field is not allowing you to be the artist or deserve what you're supposed to, and you need to fight your way through that and build your own empire. It takes time, it takes a lot, and Emiway's hustle has been similar. So I understand his connectivity with Russ. When I started hearing Russ, I loved him because the tracks are so different. It's not like that hard go नहीं, वो सुन के आए, वो अच्छी है, ऐसा नहीं मेरे को बुरा लगता है. I love those tracks. Eminem is a god for a reason, because lyricism next level, flow next level, the things that he can do, no one will want to screw with उसका him. बीट क्या है? हाँ, कितना बीट्स है उसका? जैसे आपने 1 2 3 4 बताया ना. basically if Eminem has to play, there is no counting to him, because scene ये है कि that person can flow on a 20 to 40 also if he wants. He can flow on any BPM that he wants, and I think he's one of those rare artists, very, very, very few artists who can actually rap on a 170, 190, okay, which comes into psychedelic genre. Psychedelic, and it is faster than that.
130 120 पे 140 पे साइकेडेलिक स्टार्ट होता है, ठीक है, तुम 190 170 समझ रहे हो हाउ क्या स्पीड होगा वो. एंड इफ ही कैन पिक अप ऑन दैट, he can pick up on anything. It's about being the master in what you do. एंड देयर वाज अ दिस थिंग नो कि एमिनम एक दिन में 6-8 घंटे तो सिर्फ डिक्शनरी पढ़ता है बैठ के टू नो द वर्ड्स. True. हाउ इज इट, वुड इट बी ट्रू कि ये बस हाइप बना दिया नहीं, सब नहीं. लोगों ने? It's about, see, every rapper has his own way of learning things. ठीक है, like when it comes to me, my learning process is on observation, on watching things, on hearing things. But my observation skills are a lot master, wherein I observe things which people should observe. It's right in front of them. They never end up observing it, which can literally change their life and make it much more easier. But Eminem, the way he observed things when he was into that passion, there was a lot going on. And at that time, writing had a lot of value. ठीक है, तो उस टाइम पे तुम लिखते थे, स्क्रिबल करते थे, उसको बेटर बनाते थे, ये वो. Eminem had that talent. Like वो कहते हैं ना, as I was telling you earlier, कुछ गाने आप लिखते हो, कुछ गाने आपके पास आते हैं. इंसान भी वैसे ही होते. कुछ आते हैं जो टैलेंटेड बनने के लिए हसल करते, कुछ होते जो पहले से टैलेंटेड होते. एंड एज माई डैड सेज, फिर बीच वाली कैटेगरी होती है जो टैलेंटेड भी होते हैं और हसल भी उतना ही करते हैं, तो दे ग्रो द मोस्ट. एंड Eminem, if he would be egoistic, if he would be कि हाँ मैं बाप हूँ, मैं अभी सब जानता हूँ, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, I don't think he would be Eminem that he is today. He is who he is today because वो कभी रुका नहीं है सीखने में. वो आज भी सीख रहा है, आज भी अपने यंगर लोगों को सपोर्ट कर रहा है. He is still in that game with that fire. लोगों की क्यों जलती है? लोगों की जलती है क्योंकि वो भाई कितने साल से एक ही पोजीशन लेके बैठा हुआ है. किसी और एवरीबडी कंपेयर्स सिंगल टू एमिनम जैसा हो. हाँ. And it's about when you talk about abroad hip hop, you know, the African American culture doesn't completely, अभी तो काफी थोड़ा वो चेंज हो गया, बट अभी भी खिटपिट होता रहता है बीच में. They don't completely be like, you know, Eminem is the best male rapper, or you know, rapper as such. Even if you see nowadays the reaction channels that are coming up abroad, say, ठीक है, when you type first time react to Eminem, you'll see there's new channels coming up with, you know, African American people sitting. Forget what they're reacting, listen to what they're saying. The whole time when Eminem was that big at that time, they would never listen to him, they would not consider him. There was a bias, and that bias now has started fading away. Now they are listening to him for the first time and they are like, oh damn, this is why he's considered. Because now it doesn't matter who you are or where you come from. Now the culture is changing worldwide. It's about what you can do from whatever you're doing with. You know, if you're rapping, how well can you rap? What is your versatility? What's the genres that you can play with? Now people are getting educated. इंडिया में अभी तक वो एजुकेशन आया नहीं. आधे लोग को पता है, आधे को नहीं पता है. एंड आई वोंट ब्लेम देम, बिकॉज जिनको नहीं पता उनकी एज भी देखो ना. तुम्हारे डैडी मम्मी के एज के, या तुम्हारे दादा दादी के एज के, या तो अपने एज के बाउंड्री पे आए हुए 30 35 40 पे. You at that age don't want to learn anything new. You're like, यार बहुत देख लिया, अभी क्या ही देखेगा. ठीक है. Now if someone brings something new to you, if it is interesting towards you, if you're interested, you'll be like, हाँ बताओ मेरे को. If you're not interested, you'll be like, हाँ जब फ्री टाइम होगा तब देखेंगे. टाइम फ्री होता ही नहीं कभी किसी के पास. So that's that. आई थिंक रैप सीन भी वैसा ही चलेगा जैसा हाउ बॉलीवुड एक टाइम पे बहुत ऊपर था. हाँ, it will boom. अभी उसके बाद क्या हुआ? टॉलीवुड आया, हाँ, कन्नड़ा मूवीज आई, हाँ, फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम आ गया. एटलीस्ट जो लोग प्रिमिटिव नहीं है, जो थोड़े भी मतलब आईटी सेक्टर्स पकड़ लो, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग डाइवर्ट होने लगे बॉलीवुड मूवीज से टुवर्ड्स टू हॉलीवुड मूवीज या नेटफ्लिक्स या सीरीज या समथिंग दैट मेड सेंस. True. एंड अब वापस से जैसे टॉलीवुड है, द तेलुगु इंडस्ट्री, उनकी मूवीज हिट होने लगी तो बॉलीवुड को लगा कि यार अब तो हम नीचे उतर रहे हैं. क्योंकि मुझे तो दिखा ये साफ साफ कि मैं तो बॉलीवुड मूवीज में जाना ही बंद कर दिया हूँ कि बेकार ही होगा. पैसा नहीं खर्चा कर रहा bro, लेकिन Bollywood व्हेन पीछे. इट कम्स, जैसे तेलुगु मूवी आया कोई हाँ. या तमिल मूवी आई कोई, देखने भी चले जाएंगे. कि ऑप्शन है कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ से. स्क्रिप्ट अच्छा है.
सेम गोज विद रैप आई थिंक कि ये जो बॉलीवुड के गाने ने मेजरली जो रैप सीन को दबा रहा है, इट वुड बी बॉलीवुड सॉन्ग्स कि वो दोज बॉलीवुड पीपल जो उसको ऊपर आने नहीं दे रहे, जैसे आपने बोला कि इसको कमर्शलाइज नहीं करने दिया जा रहा है रैप को। क्यों? क्योंकि आई थिंक दे वुडंट वांट द पब्लिक टू मूव फ्रॉम उनका जो बॉलीवुड का गाना है टू रैप, क्योंकि वहां पे से उनको पैसा नहीं मिलेगा। ट्रू ट्रू दैट। सो ये जो रोटेशन है ना, ये जो हमारे जैसे थोड़े बड़े लोग लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि यार इतना मेहनत है, ये लिरिक्स में सेंस है, तो इसको सुनते हैं, वो वाला नहीं सुनेंगे आप। सीधी बात है। तो दिस इज आई थिंक दिस इज द कर्व फॉर रैप, जो आगे जाके वो बूम करेगा एंड पीपल विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट फर्स्ट एंड देन सेकेंडली दिल गो टू द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सॉन्ग। I mean, if you want to, like, I can't say about Bollywood songs because honestly, I don't see any future there. Like, Bollywood था, वो रहेगा ब्रो, कहीं ना कहीं भले ही बड़े से छोटा हो जाए पर वो जिंदा रहेगा कहीं ना कहीं। पॉइंट ये है, they might shift to series and other places, but they'll always survive. The point over here is when you talk about rap, I feel right now is that वो पिनबॉल वाला गेम खेला है। पिनबॉल वाले गेम में होता है ना, स्प्रिंग ऐसा टेन 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 ठप करके जाता है। तो रैप इज देयर कि वो नीचे जा रहा है अभी, तो वो सेट हो रहा है अभी एक एक करके। अभी डिवाइन हैज गॉट वो ऑस्कर वाला सीन हुआ है, फिर काफी सीन्स हो रहे हैं। एमीवे इज बिकमिंग बिग। नेक्स्ट कमिंग है 2023, देयर आर सो मेनी कोलैब्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड आर्टिस्ट, यू कांट इवन इमेजिन द ट्रैक्स दैट आर गोना कम आउट। सो वंस दैट इज देयर, पिनबॉल के जैसा वो शूट अप होगा एंड देन इंडियन रैप सीन विल ग्रो। And right now, there is, first of all, rap will unite India, जो necessary, अभी united नहीं है India. There is a lot of मैल जमा हुआ है लोगों के दिमाग में, ये चीज या वो चीज को लेके। And the only thing that I'm worried about is, though it will unite people of different cultures to represent themselves, but at the same time, when it comes to diss, ये कल्चर ना इंडिया में ना, ये नहीं भी होता ना तो भी लोग करते थे, और अभी वो आ गया एज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप करके। इट्स ऑलवेज बीन देयर, बट नाउ पीपल आर यूजिंग इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। द पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, और यू नो व्हाट दैट कल्चर इज, दैट मेक्स सेंस, बट just randomly doing it doesn't make sense, because I have a community जिसपे मैं लाइव जाता हूँ। मैंने देखा है बच्चे लोग 19-20 साल के बच्चे लोग आते हैं एंड देन दे आर लाइक, भैया हम लोग ने डिस निकाला है ये वो। I'm like, ठीक है भाई, सुनाओ, देखते क्या है। वैसे तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है डिस सुनने का, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप। आई जस्ट इसी लाइन पे क्वेश्चन कि जैसे रोस्ट नॉर्मल जैसे अभी तन्मय भट्ट करता है, सो आई थिंक द हेल्दी रोस्ट जहां पे जिसका रोस्ट हो रहा है, ही इज रेडी टू गेट रोस्टेड। आई थिंक रैप में भी व्हेन यू से कि डिस गाना है, इट्स प्रोबेबली दोनों ने साथ में बैठ के आई थिंक दे शुड डिसाइड कि हाँ भाई हम लोग एक दूसरे को पॉजिटिवली रोस्ट करेंगे, किसी को पर्सनल नहीं होना। इज इट लाइक दैट, या फिर नहीं, ये लोग इंडिविजुअली कि ठीक है भाई अभी ये आदमी बड़ा हो रहा है, अभी प्रतीत बड़ा हो रहा है, इस पे डिस निकालते? नहीं, ये सीन तो बहुत होता ही है आजकल, बट एक्सेप्ट फॉर दिस, व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड डिस। ठीक है, बीफ इज समथिंग व्हेन इट गेट्स पर्सनल, व्हेन फॉर एग्जांपल समझो आप और आपका नेबर है, ठीक है, दोनों रैपर है, ठीक है। अब आपका नेबर बार बार आपके दरवाजे पे थूक के चला जाता है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आता है। अब 2-3 बार उसको प्यार से बोलते हो, नहीं समझता है, बार बार थूक रहा है, तो इस बार आप उस पे बीफ निकाल, मतलब एक बीफ हो जाता है, आपको झगड़ा हो गया, ठीक है। अब वो रैपर ने जाके आपके ऊपर एक डिस निकाल दिया। अब वो जो डिस ट्रैक है, विच इज बेसिकली डिसरिस्पेक्ट जो आता है, ही इज डिसरिस्पेक्टिंग यू बाय एन आर्ट फॉर्म। इट इज नथिंग फिजिकल और समथिंग लाइक, बट बिकॉज इट हैज अ पर्सनल कनेक्शन, दैट बिकम्स मच मोर हीटेड। सो एक डिस जाएगा, दूसरा डिस आएगा, एक दो करके 3-4 होने के बाद ना, फिर वो ऐसा हो गया तू ये बोला कैसे, ठीक है, और फिर हाथापाई पे बात उतर सकता है, विच बिकम्स बीफ। अब्रॉड में ये सीन्स होते थे जहां पे गोली वोली लग जाती थी, लोगों को मर जाते थे, है सीन अभी भी है, ठीक है। when that's how the Bloods and the Crips gang का सीन हुआ था, ठीक है। but when you're talking about what do you call when you're talking about this over time became better because it was first only a disrespect gesture कि यार तू मेरे को पसंद नहीं है तो मैं तेरे पे एक ये निकाल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तेरे को जो चाहिए तू निकाल, मेरे को गलत लगा मैं एक और निकालेगा। सो ये चलेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक पॉइंट प्रूव नहीं कर सकता है। दिस वॉज वन पार्ट ऑफ इट, बट
द एक्चुअल रीजन बिहाइंड जब मार्केटिंग और वो सब आने लगा इनटू द इंडस्ट्री अब्रॉड, ये इंडिया के बहुत पहले आया था वहां पे। तो जब वो सब आने लगा तो देयर वाज अ टैक्टिक विच दे हैड अप्लाइड कि लोगों को पता है तेरा मेरा जमता नहीं है, तो आपस में मिलते बात करते, है ना, देख तेरे इतने फॉलोइंग है, तेरे 20,000 है, मेरे 1 लाख है, आपस में एक डिस करते, 4 गाने निकालते, गाने का गाना भी हो जाएगा एंड वो 1 लाख फॉलोइंग म्यूचुअल भी होगा, बढ़ेगा भी साथ में। सो eventually after 4 disses or 2 or 3 disses, depending on how much the impact is, दोनों का फॉलोइंग बढ़ता है, तो उसमें नुकसान नहीं है। मैं 4 गाने में सामने वाले बंदे को गाली दे रहा हूँ, जबकि उसको पता है कि भाई मैं बना रहा हूँ, तू भी बना, साथ में करेंगे। एंड इफ दैट इज इंक्रीजिंग द सीन, पीपल गेट लाइक, ओ क्या हो रहा है, ओ भाई इसने ये बोल दिया, अरे इसने वो बोल दिया, जबकि मसाला चाहिए ना दोस्त यहाँ पे हाँ, इंडिया में। लोगों को मसाला अच्छा लगता है। अभी देख, इतना टाइम पे एमएनएम वाज एट अ पीक एट अ टाइम, आफ्टर दैट एमएनएम डिप्ड, ही टुक अ ब्रेक इन बिटवीन, काफी टाइम से आ नहीं रहा था कुछ, उसने 2-3 एल्बम निकाले, ज्यादा किसने सुना नहीं था, जो हार्डकोर फैंस थे उन्होंने सुना। देन एमजीके का डिस आया एंड उसने जो जो चीजें एमएनएम को बोला है, दैट वाज ब्रूटल, एंड ही एक्चुअली केम अप विद अ गुड डिस। वो अलग बात है, पीपल से दैट एमजीके हैड दैट डिस प्रिपेयर्ड इयर्स बैक, यू नो एंड when Eminem heard, or should I say saw what MGK had written for his daughter on Twitter, because Eminem doesn't go that much on Twitter, so when he saw किसने उसके डॉटर को हॉट बोला है, तो भड़क गया। तो वो आया, बोला हाउ कैन यू डू दिस, सॉरी बोल। तो एमजीके भड़का, बोला मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसने डिस निकाला। अब उसने जो डिस निकाला है वो लग क्या आया, बिकॉज नाउ पीपल आर लाइक, अरे इसने एमएनएम को ये सब बोल दिया है, समझ रहा है वो बंदा कब से कर रहा है, क्या लेवल पे, और ये कहाँ से आके क्या बोल रहा है ब्रो। जब ये सीन हो रहा था, एमएनएम हैड टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज अभी इज्जत पे बात आ गई थी, ठीक है। एंड व्हेन ही रिस्पॉन्डेड, ठीक है, पीपल रियलाइज्ड वंस अगेन व्हाई एमएनएम इज एमएनएम। उसने भी डिस्ट्रैक्ट निकाला, तो मैंने नहीं सुना है, आई विल लिसन टू इट ब्रो, आफ्टर दिस। इट इज ब्रूटल, किल शॉट, एंड there were so many back to back facts, back to back things that they have countered. And battle culture is very different than rapping. People kind of confuse both of them, ठीक है। लोगों को लगता है रैपिंग एंड बैटलिंग इज सेम, एक रैपर दोनों कर सकता है, नहीं ब्रो। अ बैटलर कैन बी अ रैपर इफ ही वांट्स टू, और इफ ही इज दैट पर्सन, बट नॉट एवरी रैपर कैन बी अ बैटलर। ऑन स्पॉट सोच के गाली देना, वो छोड़ो यार, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, they are not comfortable giving insults or taking insults, because that's not what they stand for. They are like, हमको पॉजिटिविटी फैलाना है अपनी जिंदगी में, पहले ही बहुत लगे पड़े। एक बार के लिए फ्री स्टाइलर ठीक है, बट बैटलर नहीं बनेगा कोई, बिकॉज द पीपल हु डू इट, दे आर रिस्पेक्टेड लाइक एनीथिंग, जो इंडिया में नहीं कर रहा है कोई। ओ एमसी कोड वाला सीन हो गया था, ठीक है, जहां पे पूरा वो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई थी, दैट टुक ऑफेंस ऑन व्हाट ही सेड अबाउट रामायण और महाभारत बार और समथिंग, एंड लोग उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, एंड वो खुद अलग डिप्रेशन में था, सो ही हैड बीन थ्रू अ लॉन्ग फेज। देयर वाज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट देयर वाज, यार दिल्ली वाले सीन लोग का कितना बढ़िया बैटल कल्चर है, लाइक जितना मुंबई में है बैटल कल्चर, but the Delhi battle culture I feel is little better when it comes to bars and the complexity of actually how a battle should be, you know and the episodes that they had uploaded were in bulk, उनको पूरा उतारना पड़ा, बिकॉज वो लोग दे वर लाइक, यार किसी और के जान पे खतरा हो जाएगा ऐसा, तो बिकॉज बैटल बार्स आर ब्रूटल, वहां पे ये नहीं देखते धर्म क्या है, जात क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इट इज अ बॉक्सिंग मैच, नॉट एवरी वन कैन बी अ बॉक्सर। तुम घर पे ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट मैच के अंदर उतर के नहीं होता है भाई। मतलब पीपल आर रिस्पेक्टेड फॉर अ रीजन, बिकॉज when you're in that match, it's only your punches that count, and every bar you give needs to have a punch. And if you, for example, if I give you a bar and it's an insulting bar, वो 1 point हो गया। if you give me a bar, वो again 1 point हो गया। but if I say something about you which is not true or which is hypothetical, and you counter it insulting me with a counter to that bar, then it's directly 5 points, right?
So it is a technicality based thing which is exactly like a boxing match, and people kind of take it personally. अरे जब बैटल में दो बंदे लोग एक दूसरे को गाली देने के बाद मैच खत्म हुआ है, गले मिल के गए, दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप यार. उसको प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? वही बॉक्सिंग मैच में अगर कोई मार खाता है तो वो हाँ. घर जाके उसको थोड़ी मारता है. सीधी बात. और अभी ऑब्वियसली अगर कोई बंदा, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु यू डोंट नो, और वो बंदा तुमको मोटा दिख रहा है, तुम पतले हो, तुमने उसको मोटे वाले बार्स मारे, ऑब्वियसली वो तुमको, तुम जैसे लगेगा या जो वो हाइपोथेटिकली सोचेगा वो वैसे बार्स मारेगा. और ऑब्वियसली इफ ही डजंट हैव बार्स ऑन हाउ यू लुक, or if he has researched something about you, like your caste, your religion, what your beliefs are and what, he'll try and pull you down there. It is a complete match wherein nothing is right and wrong. It's clearly about points, right? And उसके बाद तेरे को ग्रज वज रखना है, बात का बात है, तू ग्रज रख, बट अगर तेरे को क्लियर करने का ये ग्रज, तो वापस एक और बैटल में आ, बात वो है. एंड right now India is not ready for it. They are not ready for a roast. You think they'll be ready for a battle? They can't take humor. Dude, हंसना सीखो यार. कॉमेडी जो एक्चुअली उनका नाम है कॉमिक्स, हाँ. उनको ही नहीं छोड़ा. लाइक मैं जोक कर रहा था भाई. People need to learn to adapt to the way the world is changing. There was a time everyone used to wear sari. Now there is a time most of the people wear shorts. Abroad jao, there are people on beaches, on regular streets who wear, bikini and they're just roaming. It's not about our culture. Our culture है वो ठीक है. Only because तुम जो पहन रहे हो, that doesn't stand against your culture. तुम जो सोचते हो, तुम जो बिलीव करते हो, वो तुम्हारा कल्चर है, वो तुम्हारी संस्कृति, वो तुम्हारा संस्कार होता है. ठीक है, तुम क्या पहने हो उससे वो तुम्हारा कल्चर नहीं दिखाता है. सामने वाला तुमको उस पहनावे में देख के तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, उससे उसके दिमाग का कल्चर समझ में आता है कि वो कितना अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है. अब्रॉड नो वन गिव्स अ शिट, बिकॉज उन लोगों को बचपन से सेक्स एजुकेशन है. उनको ये सिखाया जाता है कि लड़कों लड़कियों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या है. हम लोग को क्लास में क्या सिखाते हैं ब्रो? रिप्रोडक्शन क्लास बोल के 2 फ्लावर दिखाते थे, पोलन्स दिखाते थे, घटर नहीं समझ में आता था कुछ. तो अभी हाउ इज द ऑटो ट्यून का सीन इन रैप? डज इट वर्क? सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो देखा है मैंने, वो लोग फ्लो जो लाते हैं, वो ड्रैगीनेस जो है वो तो आता है, बट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रैपर्स, वी आर नॉट सिंगर्स. ना हम लोगों को कोई ट्रेन किया है. अगर किसी को किया है तो वो उसका बाय प्रिविलेज है, जो उसको साथ में बेनिफिट मिला है. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बचपन से वो आवाज के साथ आते. रैप करते करते इफ यू हैव अ गुड वॉइस एंड यू आर अ बिट इनटू सिंगिंग, obviously it is a benefit for you, but not every rapper is a singer. And it's very irritating when people say अरे ये बहुत अच्छा है बट इसमें थोड़ा गा के बताओ ना. अरे रैपर है यार, सिंगर नहीं है वो. सिंगर चाहिए तो आतिफ असलम या अरिजीत सिंह को लेके आओ हुक गाने के लिए. एंड इवन रैपर्स themselves when they create tracks in an initial phase, ठीक है खुद से कर लेंगे क्योंकि बजट नहीं रहता. जो जैसे जैसे बजट आता है, it's about getting more artists, more singers who are struggling more, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. आपस में ही हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं कि भाई चलो मैं भी असल, तू भी असल, साथ में आ जाओ. ठीक है, एंड वी क्रिएट दैट टुगेदर. दैट्स हाउ, बिकॉज आवर पॉइंट ऑफ इट इज गाना अच्छा निकलना चाहिए. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ. अगर है नहीं मेरे को करने के लिए, इफ आई नो समवन देन रादर दे डू इट. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑटो ट्यून, बीइंग ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून यूज होता ही होता है. इवन द मोस्ट प्रोफेशनल, इवन सोनू निगम विल एटलीस्ट यूज 5% और 2% ऑफ ऑटो ट्यून. ठीक है, सलमान खान जैसे 40% नहीं भाई वो अलग ही है. वो 40% बोलने के लिए था, मेरे को लगता नहीं 40% था, उससे कहीं ज्यादा ही होगा. ठीक है, बट again there are few tracks which require 100% of auto tune, because that vibe or that feel of that track will only come when that kind of auto tune is applied. ठीक है, एंड ऑटो ट्यून लोगों को लगता है एक होता है कि तुमने लगा दिया और हो गया काम. वो ऐसा नहीं होता है. ऑटो ट्यून अलग अलग कंपनी के आते हैं, वो एक प्लगइन है. वो प्लगइन में तुम हाउ आर यू सेटिंग है, तुम कितने अच्छे से जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर सकते हो. That depends on how the quality of music comes out. If you're, 10 times better than me, then you are not a singer. If you're 10 times better than me, then you are a rapper. ठीक है,
यूजिंग ऑटो ट्यून बट यू यूजिंग इट इन द रॉन्ग वे, तुम 200% लगा दो, कुछ मतलब नहीं बनने वाला है, वो गंदा ही साउंड करेगा. बट that rappers are doing it, not every song needs it. And few songs, yeah, if you think it's a singing kind of track or a mumble kind of ये kind of track है तो तू डालेगा उसमें, because वो vibe देता है. And if your person who's listening has been listening to Travis Scott, has been listening to a lot of new gen, artists, when you put them in your ears, you have that feel, you have that vibe of, oh, this is like a different vibe, a new gen vibe. Now, being very honest, India का hip hop scene, sound wise, technicality wise, education wise, अभी boost लेना start किया. Now is when the masses have started understanding what rap stands for or what rap is, right? When that is the scene, it will take time for people to get adjusted with different kinds of music. If you're a person who is used to listening to Atif Aslam and Mohammad Rafi and Nusrat Fateh Ali Khan what's that guy's name? यार नाम भूल रहा हूँ मैं. बट इफ यू आर लिसनिंग टू ऑल दिस महारथीज, ठीक है, दे हैव बीन ट्रेन्ड, वो लोग क्लासिकली ट्रेन्ड है. वो लोग नींद में भी गाएंगे बड़बड़ाते हुए तो भी तुमको कान में सुर सुनाई देगा. भाई हम लोग तो वैसे भी बेसुरे हैं, हम अगर गाएंगे तो वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देने वाला है. बट द पॉइंट इज, दैट्स व्हाट हसल इज. वी आर ट्राइंग अगेंस्ट आवर ऑड्स. We are going out of our boundaries to try. And again, on that point, a shout out to Tune Fry, because when you look at all the industries like distributors, जो होता है, music distributors, labels, whatever, labels like Believe Music or what do you call, Spotify, Apple Music, DistroKid, all of them कहीं ना कहीं से आर्टिस्ट को मैनिपुलेट करके लूट ही रहे, कहीं ना कहीं से ब्रो, कुछ ना कुछ है. और आर्टिस्ट के पास ऑप्शन नहीं है तो बेचारा हाँ हाँ बोल के कुछ कर लेता है कि यार वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था, तुम लोग एटलीस्ट कुछ करा रहे हो, कुछ तो होए. बाद में मालूम पड़ता है कि जो गाना तुम बना रहे हो तुम वही परफॉर्म नहीं कर सकते, तुम्हारे पास परफॉर्मिंग राइट्स नहीं है, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं है, तुम उससे पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तुमको खाली बेसिक बेसिक चीजें दिए जा रहे हो, उल्टा तुमसे लूटा जा रहे. इवन आफ्टर यू लीव द कंपनी, you feel bad as an artist, because as an artist you've been hustling for so many years, you've cried nights, and now when you're getting something, then some random third party just comes, says, oh, we gave you little, so we'll take everything what you made and everything that you have. That's wrong. And now the artist has to start from the beginning with the name that he has. But नाम का क्या करेगा ब्रो? मतलब नाम है तेरा, तू बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, बट तेरे घर पे पैसे नहीं आ रहे. एज किंग एंड रफ्तार वेरी वैलिडली सेड, अगर तुम लोग के घर वाले हॉस्पिटल में हैं तो वो नाम काम आएगा क्या? पीपल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, सेंड 5-6 lakhs to get your parents fixed or your life fixed. That's not how it works. So obviously that makes sense. But doing it in the wrong way is again wrong. TuneFry is a company started by a 19-year-old. That guy was told whether you either stay at home and you do your engineering, or either you leave home and do your music. Because if you're doing music, we won't keep you. This guy had that much courage to say, I'm done, I'm leaving. He went on his own, he started his own company. Now his company is supported even by Raftar, and he's doing good. And the whole motivation behind starting a distribution platform is so that the artists get what they deserve. वरना डिजर्व ही नहीं कर रहे यार, डिजर्व कर रहे बट मिल नहीं रहा है. जितना गाने बनते, there are so many good newcomers. They should at least a minimum get 20 to 30,000 people hearing them. बट आता कितना है? 200, 300, 4 लोग, 5 लोग. That's disappointing. And with those numbers you can't even show at your house saying कि देखो, क्योंकि पेरेंट्स भी अजीब बात करते हैं यार. यू शो देम योर थिंग एंड they'll be like, किंग को देखो, रफ्तार को देखो. I'm like, ब्रो, उसका असल देखो, देखो वो क्या क्या गुजर चुका है, अब जाके हो रहा है. जब वो स्टार्ट किया था तो उसको भी ऐसे ही आ रहा था. बात का बात है वो. सो एक आई सॉ योर वीडियोस एंड आई कैन सी कि प्रोडक्शन में भी पैसा लगता ही है, बहुत लगता है भाई. तो एक मिनिमम कितना खर्चा हो जाता है? एक डिसेंट, मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम तुम लैम्बोर्गिनी लगा दो,
लेकिन एक बेसिक की भी अगर तुमको थोड़ा ट्रैक्शन चाहिए यूट्यूब पे तो यार इतना खर्चा तो होगा ही। देखो सीधा बात है, आपके जो वीडियोस आते हैं, इफ यू हैव अ विजन ऑफ कमिंग इन वीडियोस और मेकिंग योर वीडियोस कम ऑन नेटफ्लिक्स और समथिंग, देन तुमको वो स्टैंडर्ड क्वालिटी देना पड़ता है इंडस्ट्री का, ठीक है। एंड ऑडियो वीडियो दोनों में चाहिए। I am doing the best that I can. With every track I do, I try making the audio and video better. I try doing new things to, try and get different kinds of people to understand what I'm doing. Once I've caught on to them, then I'll make, those kind of things that people want to hear. Because next year, everyone has been asking for lyrical. Next year, I want to get on like 30 tracks with in four EPs, different. And सबका अपना अपना जॉनरा होगा। गिव देम व्हाट दे वांट टू हियर। तुम लोगों को चाहिए ग्रेनेड फटे फटेगा। बट बिफोर दैट हैपेंस आई जस्ट वांट टू गिव आउट 14 ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट जॉनरास विद वीडियो। अब सीन ये होता है, वीडियो के 4 लेवल होते हैं, ठीक है। एक होता है जो आपका सबसे बेसिक लेवल होता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फोन है खाली, या दोस्त के पास फोन है और आपको वीडियो बनाने का है। लोग क्या करते हैं ना, कैमरा ऐसा पकड़ते हैं, हाँ ब्रो कर ब्रो, ऐसे ऐसे हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद में वीडियो फालतू आता है, ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं यार वीडियो ऐसा है, हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है, बहाने बहुत देते। बहाने मत दो, सोल्यूशन निकाल के लेके आओ। एक्सक्यूजेस सबके पास है। अगर सब लोग आरआर करने बैठे तो भाई रात बीत जाएगी। सोल्यूशन दो, ठीक है। सीन ये है, टिकटॉकर्स, this is one thing that from that platform I should say rappers should learn who are beginning. यार, see TikTok videos not which are on the app. Go and see it on YouTube. The camera angles, the way they shoot it. Because उन लोग जो ट्रांजिशंस डालते हैं, उन लोग जो डाल रहे ना भाई, वो ऐसा नहीं है कि इफेक्ट डाला और चढ़ गया हो गया। दे शूट इट दैट वे कि भाई कैमरा नीचे रखा हुआ है, फोन उस पर टांग रखा, फिर निकला, फिर दूसरा कपड़ा पहन के आया, फिर वो किया। कभी पंखे से सेलो टेप लगा के वो लोग पंखा 1 के स्पीड पे घुमा रहे हैं, ऐसा घूम रहा है, वो शॉट लिया। इट गिव्स डिफरेंट, एक अलग वाइब आता है। एंड व्हेन यू डू दैट विद 15 डिफरेंट शॉट्स, ठीक है, एंड इन योर वीडियो यू हैव एटलीस्ट टेकन 3 डिफरेंट लोकेशंस, shot at 3 different locations from 3 angles each location, the whole track. And then you have slow-mo shots, you have cinematic shots, you have creative shots. जब तुमको ये बेसिक्स पता है, जो शूट कर रहा है अगर उसको पता है, तो देन उसके हाथ में तुम एक छोटा सा फोन दे दो, तब भी बढ़िया वीडियो आएगा। एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर आर क्रेजी। एडिटर कितना करेगा ब्रो? एडिटर वो ही कर सकता है जो तुम उसको देते हो। अगर तुम, अभी मैं तुमको बोलूंगा बटर चिकन बनाओ, मैं तुमको बटर दूंगा और बोलूंगा देख लो इसमें जो कर सकते हो, बटर चिकन थोड़ा बनेगा, वो बटर बनेगा खाली, ठीक है। तो इफ यू डोंट गिव ऑप्शंस टू द एडिटर, वो क्या ही करेगा? वो कलर एडिट करेगा, थोड़ा कट पेस्ट करेगा, बस दैट्स द बेस्ट ही कैन डू। इफ यू हैव मल्टीपल शॉर्ट्स, मल्टीपल ऑप्शंस, देन ही कैन मेक अ बेटर वीडियो फॉर यू। एंड उसमें उसका फायदा नहीं है, तुम्हारा फायदा है। वो अलग बात है कि वीडियो अच्छी आई तो वो बोल सकता है ये काम मैंने किया है। बट अगर वो ऐसा वीडियो बना रहा है कि उसको खुद को शर्म आ रही बोलने में मेरे को मैंने ये काम किया है, उसके भी काम का नहीं है ना, तुम्हारे काम का है, ठीक है। तुम खाली फालतू चीजें डाल रहे हो, अपना गाना वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा टाइम, थोड़ा एफर्ट ले लो, अच्छे से बना लो। व्हेन नाउ दिस हैज नो कॉस्ट इफ यू आर डूइंग इट विथ योर फोन और व्हाटएवर। नाउ कम्स टू द सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में क्या होता है, तुम्हारे पास एक हाई क्वालिटी फोन हो गया, जो आईफोन हो गया, जो भी, सेम थियरी हियर ऑल्सो। दैट्स अगेन अ प्रिविलेज दैट यू गेट इफ यू हैव, नो, इवन इफ यू डोंट हैव द प्रिविलेज, फाइंड आउट तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे फैमिली सर्कल में किसी के पास होगा। जिसके पास भी है यार, ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो उसको मेरे को 3-4 दिन के लिए दे दो, कुछ 6-7 घंटे, 8 घंटे के लिए चाहिए तुमको। 8 घंटे में जाओ, ट्रैवल करो, खत्म करो, शॉर्ट दे दो वापस। फाइल ट्रांसफर करना है तुमको खाली, वो है। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ हायर बजट देन दैट, आई विल, बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। माय फादर इज इन अ इवेंट फील्ड। बात यह है, मेरे डैड मेरे को सपोर्ट करेंगे कि हाँ तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना सपोर्ट नहीं करेंगे कि तेरे को सब कुछ प्लेट में लाके दूंगा, ठीक है। ही वॉन्ट्स मी टू हसल बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। ही वॉन्ट्स मी टू अंडरस्टैंड हाउ द फील्ड वर्क्स। आज मेरे को प्लेट में दे देंगे भाई, कल प्लेट में नहीं देने वाला। अगर डैड को कुछ हो गया तो मेरे को एंड ऑफ द डे मेरे पे ही फटेगा वो। एंड इफ आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, मेरे लगेंगे। सो when he called one of his
older guys who he was working under, my dad, that person is a cinematographer. He started with a budget of 2000 rupees कि 2000 में पूरा वीडियो करता है. आज वो बंदा साउथ इंडियन मूवीज के लिए सिनेमाटोग्राफी करता है. तो ये बंदे को बुलाया, बंदे से बात किया. मैं मना कर रहा था, मैंने बोला जरूरत नहीं है, मैं कर लेगा, रफ वीडियोस बना लेगा, चलेगा. बट डैड वाज लाइक नहीं नहीं, वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना है इन द स्टार्टिंग, यू नीड अ गुड क्वालिटी वरना योर ब्रांड विल बिकम दैट वे. It's not only about the quantity, it's also about the quality. You need to give both together. And if you can't give both, पहले बना लो, फिर बल्क में एक एक करके डालते रहो, हर महीना एक. पहले बना लो. ऐसा नहीं कि अभी बना एक चढ़ा है, फिर दूसरा बना है दूसरा चढ़ा है. इवन आई एम डूइंग इट रॉन्ग राइट नाउ, बिकॉज मेरा स्केड्यूलिंग रॉन्ग है, मेरा बजटिंग रॉन्ग है, मेरा लाइफ के हसल के हिसाब से मेरे को चलना पड़ रहा है. एंड जब आप बना लेते हो तो उस बंदे ने मेरे को एक बजट दिया था. आई टोल्ड हिम माय आइडिया फॉर हक है ना. You know what's the budget he gave me? 1,70,000. मैंने बोला भाई क्या कर रहा है तू, गाड़ी नहीं खरीदनी मेरे को, वीडियो बनाना है. और ना मेरे को नेटफ्लिक्स स्पॉन्सर कर रहा है जो मैं 1,70,000 तेरे को दे दूं. ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया. आई न्यू वन ऑफ माई होमीज हु यूज्ड टू डू इट. आई कॉल्ड हिम अप, उसने मेरे को 30,000 बोला, 30,000 में बन जाएगा. एंड ऑफ द डे इट टेक्स 30, 35, 40 वहां तक पहुंच जाता है. बिकॉज तुम्हारा वीडियो का शूट और एडिट में इट टेक्स अराउंड 25. ठीक है, जो वो करता है. एंड इट इज नॉट अबाउट कितना लेता है वो, इट्स अबाउट उसको काम आता है कि नहीं, उसमें वो दे पाएगा क्या. एग्जैक्टली क्योंकि जो बंदा मेरे लिए करता है वो बंदा मेरे लिए बल्क में प्रोजेक्ट्स कर रहा है. वी आर डूइंग 14 प्रोजेक्ट्स टुगेदर. सो बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ऑफ दैट 10 to 14 प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई एम डूइंग इट इन बल्क, उसको पता है वो रेगुलर कैश आने वाला है. सो वो मेरे लिए एक स्टेबल रेट में थ्रू आउट करेगा. एंड अभी हम लोग का बॉन्ड ऐसा हो गया कि वो हमेशा मेरे लिए वही रेट में करेगा. बट when it comes to doing it for others, he might charge 35, he might charge 40, whatever, only for the shoot and edit. But it's about the work that he knows. It's not only about how he's doing it, it's about he knows his camera angles, he knows क्या करना है. भाई हम लोग इतने अजीब तरीके से शूट करते हैं ना, मैंने आज तक किसी को ऐसा शूट करते हुए नहीं देखा है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपका शूट में एक स्टोरी लाइन होता है कि ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये शॉट, ऐसा शॉट, यहाँ से आएगा कैमरा, एक आइडिया रहता है. मेरे सीन में मेरा अलग है. मेरा बॉन्डिंग उस बंदे के साथ इतना अच्छा है ना, शिवम के साथ. मैं शिवम को बिठाता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ब्रो देख ये गाना है, ऐसा है, ये मेरा विजन है, दिस इज द स्टोरी लाइन दैट आई हैव इन माइंड. बोलता है भैया समझ गया, बाकी मेरे पे छोड़ दो. शूट के दिन पे मेरे को स्टार्टिंग में 1-2 दिन पहले बोल देता है कि क्या क्या रेडी रखना है. मैं वो चीजें रेडी रखता हूँ. शूट के दिन स्टार्ट रिकॉर्ड बोलने तक मेरे को पता नहीं वो करना क्या है, मैं ब्लैंक होता हूँ. फिर मेरे को बोलता है भैया ऐसे खड़े रहो, ऐसे ऐसे कुछ करो, आप अपना परफॉर्मेंस शॉट कर लो. ही रन्स अराउंड विद द कैमरा, ही डज हिज एंगल्स, because he's not only thinking from the shooting perspective, he's also thinking from the editing perspective. So when you have the shooting team and the editing team as one person or one team, you'll always get a better product. Because they are thinking from both the perspectives and giving you what the best they can do. And the curiosity even he has for what he does, the passion that he has to do something, better than I have done last time, that speaks. And whatever work he has done till date has always been top notch. मेरे कंपनी में नॉर्मली अगर मेरे डैड का मैंने बंदा लिया नहीं जो 1,70,000 मांग रहा था, मैंने 30,000 में वो कराया. मेरे डैड ऐसे है ना कि अगर मैंने किसी और से कराया और वीडियो गंदा निकला ना, तो बोलेंगे हाँ हो गया तेरा 30,000 में करा के, मजा मिला तेरे को, है ना, ताने उंगली करते रहते, वो मजे मस्ती में चलता है. बट जब उन्होंने वो वीडियो देखा, he has not said a word, plus he said come out nice. तो समझ रहे हो उसका मतलब, फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी क्रिटिकली एनालिटिक टू अ पर्सन सडनली बिकमिंग कि नहीं अच्छा काम है, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स मी एन आइडिया. एंड शिवम का मेरे साथ है थोड़ा, बिकॉज सीन ये है, मैं ना थोड़ा एज एन आर्टिस्ट मेरा रहता है कि यार मेरा विजन ऐसा था, मेरे को ऐसा चाहिए, ये भी अच्छा लग रहा है. शिवम मेरे को बोलता है भैया चुप हो जाओ, आपका आइडिया नहीं है, आप साइड में बैठ जाओ, इसमें मत घुसो, ठीक है, मैं करने दो. बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई नो व्हाट माय विजन इज, I know what I want to show. He knows my vision. But as a person who's doing it professionally for so long, he also understands what the market wants to see. So, वो अपने साइड से जो एडिट करता है, जिस तरह करता है, जो चीजें करता है, that's what people like and they are like यार बढ़िया है.
एंड फिर बाद में जब रिस्पॉन्स दिखता हो फिर मैं उसको कॉल करके बोलता है हाँ अच्छा हुआ तुमने बोल दिया, मैं तो भाई मतलब मेरे को तो बेसिक नॉर्मल वाला भी अच्छा लग रहा था, तो बोलते हैं हाँ भैया आप शूट के टाइम से देखते आ रहे हो ना क्लिप्स इसलिए आपको वो हो गया करके, तो वो सीन है। आई वॉज गोइंग थ्रू, मैंने तो हकेना सुना ही है, आज मैंने आत्मनिर्भर सुना, उसका वीडियो देखा, मैंने कहा ये वीडियो, हकेना का वीडियो कहाँ है? आ, उसके बाद यू हैव अनदर सिंगल, इट्स नॉट रैप, इट्स द सॉन्ग जाना ना। जिस, हाँ, उसका प्रोडक्शन क्वालिटी कहाँ है? हम्म, उसके बाद ये आत्मनिर्भर देखा, मैंने कहा ये कैसे जा रहा है ग्राफ। So I'll tell you the story behind it. I was in Mumbai and मैं मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे, आई हैड गॉन थ्रू वेरी बैड फेज इन लाइफ एंड मैं उस टाइम पे रास्ते रास्ते पे सो रहा था वाला सीन, एंड घर पे भी उतना बात नहीं हो रहा था, डैड मॉम से पैसे नहीं ले रहा था, मॉम से तो बात ही नहीं थी, डैड से कुछ बता के नहीं रखा था मैंने, और घर छोड़ के गया था तो ज्यादा हुआ नहीं था सीन। Dad one day came to know about me and he called me. And he's always been like my savior angel कह सकते हैं ना, वो सही टाइम पे सही कॉल आ जाता है, सालों में बात नहीं हो रही है और सडनली कॉल सही। Bro, I'm not kidding. I was standing at a bridge. I was depressed with life at that point that I was standing at a bridge looking down thinking, should I or shouldn't I? And something starts ringing in my pocket and I snap out of it. I'm like, अभी कौन कॉल कर रहा है? Like फोन ऐसे करके देखा हो and it's my dad. After 5 years he's calling me of not talking 5 साल बाद suddenly. And मैं उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से इतना गुजर रहा था कि मैं इतना पतला हो गया था ना, मेरे रिब्स के हड्डियां देख पा रहे थे। एंड मैंने बोला हाँ हाँ डैड क्या हुआ? एंड ही इज लाइक मैं यहाँ जोया अली खान का इवेंट करने आया हूँ ताज में, मिलो मेरे को, बात करते। मैंने बोला कभी? बोलता है अभी 2 घंटे में। मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल के लिए पैसे भी है और वहां आने के लिए कपड़े भी नहीं है ठीक से, तो बोलते हैं क्या है तेरे पास? मैंने बोला फॉर्मल्स का ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहना है और कुछ फटे हुए सॉक्स है। बोलते हैं हाँ तू पहन के आ हम लोग देख लेंगे। मैं वहां गया हूँ, मेरे को बैठे मेरा पूरा इवेंट के बाद मेरा पूरा कहानी सुना। He didn't say a word. He said, okay, fine. हुआ हुआ. What do you need right now? I said, I just need a place to stay. I have joined a job. I'll earn. That's not an issue. I started earning because of that support that he gave me at the right time. And the support that he gave me at the right time just got me out of that, phase. And I was like, nahin, hustle to karne ka hai. And I got back into it. And I remember द सैलरी यूज टू गो इन माई लोन्स, तो आते ही चला जाता था। खाने के लिए 2,000 बचते थे जो पूरा महीना चलाना है, एंड ट्रैवल वैवल का तो भाई पैसे ही नहीं, तो चल के ही जाता था सब जगह। सो धीरे 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 10 रुपए 20 रुपए 500 रुपए थोड़ा थोड़ा जमा करके ऑडियो इंटरफेस खरीदा, ये खरीदा वो खरीदा। एंड डैड को 3 साल से तंग कर रहा था उसके एकदम पहले से, और डैड को पता था मेरे को लैपटॉप की जरूरत है। सो ही एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन द लैपटॉप, थोड़ा उन्होंने भी दिया। तो मेरे पास एक पूरा थोड़ा एक दो चीजों का सेट हो गया। जब आत्मनिर्भर निकला, I was not supposed to take that song out. I was supposed to take few songs out together later on, like in 2016, 17. 2014 में dad ended up calling me and he's like, तू रैपर है? बोला, हाँ वही तो कर रहा हूँ, बोला तो था। बोलते है गाना किधर है तेरा? बोला रेडी पड़ा है मेरे पास 4 गाने। बोलते डालो फिर। मैंने बोला डालो फिर क्या, इक्विपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, गंदा आएगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, डालो। ठीक है तेरा प्रेजेंस दिखना चाहिए, डालो अभी। उससे यार ऐसे कैसे डाल दूं मैं, तो फोर्स कर रहे थे। उस टाइम पे लैपटॉप वैपटॉप कुछ था नहीं, तभी फोन था। वो फोन पे मैंने तभी बैंड लैब्स इंस्टॉल किया। आई कैसे ना कैसे कबर्ड के अंदर रख के रिकॉर्ड किया। आत्मनिर्भर था, बीच में गड़बड़ सा कैसा लॉकडाउन, ये पूरा तड़ पड़ रहा, उस टाइम पे लॉकडाउन आ रहा था। तो उन्होंने बोला दिस इज लॉक जस्ट 2 years बैक का स्टोरी यूर टेलिंग? 2014। उस दिन कौन सा लॉकडाउन आ रहा था? नहीं, दैट वाज द फर्स्ट लॉकडाउन दैट हैड कम इन। एंड दो साल पहले तो कितना, दैट वाज द थर्ड लॉकडाउन और समथिंग। अभी तो फोर्थ वाला अभी हाल ही में आके निकला है, तो थर्ड लॉकडाउन का कुछ था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम व्हेन दे वर सेइंग दैट इट वाज गोइंग टू, दे वर गोइंग टू क्लोज डाउन एवरीथिंग एंड घर पे रहना है ये वो। उस टाइम पे एकदम सीरियस लॉकडाउन नहीं होता, बोल रहे थे, तो सब लोग गाने निकाल रहे थे कोरोना वायरस इस पे उस पे। तो
डैड का मेरे को कॉल आया, और डैड को ना रैप के बारे में, मेरे कल्चर के बारे में समझ में नहीं आता उतना. नाउ ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ बिट. मेरे साथ उनके बहुत झगड़े हुए. वो मेरे को बोलते हैं टिकटॉक कर. मैं बोला यार मैं टिकटॉकर नहीं है, मैं नहीं कर सकता वो, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल. ठीक है. देन ही इज लाइक दूसरों के गाने गा, इट इज अगेन डिसरिस्पेक्टफुल. एज अ रैपर यू आर नॉट सपोज टू सिंग कवर सॉन्ग्स. You sing either your song or either you don't sing. You don't sing other people's song on stage. It is disrespectful. Plus, you do not have the performing rights. That is another issue. ठीक है. So ये सब चल रहा है. And ये there are things that he doesn't understand. It takes me time to try and make him understand. जब आत्मनिर्भर निकला, मैंने गाना रिकॉर्ड किया. अब डैड बोले वीडियो भी चाहिए. अब मैं वीडियो कैसे. एंड आई वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस कि कैमरा पे पता नहीं कैसे दिखूं एंड ये वो. सो मेरे को डर लग रहा था. मैंने क्या किया, एक लिरिकल वीडियो डालने का सोचा कि यार कैमरा का तो अभी क्वालिटी नहीं है, बाहर भी जा नहीं सकते, तो घर पे ही बैठ के बना लेता. मैंने एडिट किया फोन पे. इफ यू नोटिस देर इज अ प्रॉब्लम इन दैट सॉन्ग. लिरिक्स का फ्लो का डिलीवरी में एक प्रॉब्लम है जानबूझ के. आई हैड टाइम टू फिक्स दैट. मैंने जानबूझ के फिक्स नहीं किया. I want people 2 years, 3 years, 10 years down the line to look at my first song and say कि इसका पहले गाने में गड़बड़ था. फोन से किया था, गड़बड़ था, पर डाला. जितने लोग को नहीं आता है, डोंट फील स्कैर्ड कि मेरे को नहीं आता है तो मैं डालू कि नहीं डालू. भले ही कुछ भी है, स्टार्ट करो. दैट टाइम माई फादर वुडंट हैव पुश्ड मी. मे बी आई वुड हैव, आई डोंट नो, ज्यादा देर लगता है या कुछ. बट बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रैक, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स, आई मेड अ बेटर ट्रैक. I knew that this was something done on phone. I was fortunate enough to find good people in my life who could guide me. I had one of my friends who fortunately was A.R. Rahman's sound engineer. So बात करते करते पता चला, मेरे को भी मालूम नहीं था. और हम लोग बैठ के, मैं उसके घर पे जाता था, और प्रशांत बड़गू नाम है उनका, प्रशांत भाई से हम लोग बात करते थे. मैं सीखता था उनसे, वो मेरे को सिखाते थे थोड़ा. मैं थोड़ा था, मेरे को इतना सीखना था, बट इक्विपमेंट नहीं है. वो जो सिखा रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा है. मैं हाँ 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 कर रहा है और सीखने का कोशिश कर रहा है. एंड he told me that I'll record a song for you. I'm like, cool, I'm getting a sound engineer of that, two A.R. Rahmans to record a song for me. Great, he'll do the mixing also. And I went there, he recorded the track for me. The track came out great. And at that time This was which track? जाना ना. जाना ना अभी तो आया था. I wanted to give something commercial as well, ताकि एक vibe रहे. So I wanted to show my dad that I can do multiple things. I can give this quality also, that quality also. You just need to give me a chance. It was not about the track. It was more about proving myself to my dad at that time, because I didn't care about anyone, what they thought or how they felt or how I looked. It was only I wanted to see that thing in my dad's eye that नहीं अभी ये कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, छू गया. So वो किया. एंड जाना ना केम आउट वेल. आफ्टर जाना, वो भी वीडियो पूरा फोन पे एडिट करके बनाया. सो जाना ना का वीडियो अभी तक लोग देखते हैं, यकीन नहीं होता कि पूरा फोन पे बनाया. एंड देन आई टुक अ ब्रेक. अंजलि वाला ही ना? नहीं 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 नहीं, नॉट दैट, नॉट दैट. अंजलि वाले का नाम क्या है? तू और मैं. करेक्ट, तू और मैं. सो व्हाट हैपेंड इज आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक. फिर मैंने गाने लिख रहा तो था, पर मैं डाल नहीं रहा था कि मेरे को इस बार वीडियो डालने का था. I took at least a year or year and a half, almost 2 years. Then I came to Bangalore. Then I started shooting. And यहाँ पे शूट करने के टाइम पे डैड ने मेरे को बोला I'll support you, but एक ही टाइम पे. फिर वो कितने चाहिए वो बता. मैंने बोला देखो मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 14 गाने निकालने. अब वो 14 में मदद करो, बाकी पूरा मैं कर लेगा. ठीक है, क्योंकि दैट 14 ट्रैक्स, if I get a proper support on that 14 tracks, I know with those 14 tracks I can publish myself and get more work. And जो दिखता है वही बिकता है ना भाई. दिखाने के लिए कुछ होगा तभी तो बिकेगा. जब तेरा दिखाने का आइटम ही नहीं है वैसा कि कोई खरीदना चाहेगा, तो why would they invest in you? अभी MC Stan को देख लो. There are not many people who like his music. There is a whole Stan army who follows him. But at the same time, the personality, the marketing that he has done on his clothes. भाई बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड देख लो, बंदे ने साफ साफ बोला है मैं 70-80 लाख पहन के चल रहा हूँ.
That is only what he's wearing. It's not even what is on his neck. His neck itself cost, only two of them cost around 1.5 crores. So बंदा खर्चा किया अपने पे. अगर आज वो फ्लॉप भी होता है, उसने वो चेन्स भी बेच दिए खाली, इट विल गो फॉर क्रोर्स. ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज व्हाट इट कॉस्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज ब्रांड वैल्यू. एंड ही कैन डू मच मोर. उसका डूबा हुआ करियर वो वापस रिवाइव करवा सकता है उन चीजों से. Today there will be brands like Versace and other brands and all who will want to sponsor him because of the clothing, persona that he has created over time. And it's not a joke, it's a big deal. And I feel it's important for people to understand that. And people are like, मेरे को बस गाने डालने यार. तुम लोग गाने डालने तो डालो, स्पॉटिफाई पे डालो, बाकी चीजों पे डालो. तुम लोग का एंड ऑफ द डे वीडियो डालना है तो जल्दी क्या है, गाने डालो. लेट्स सी हाउ योर सॉन्ग वर्क्स. इन द मीन टाइम, टाइम, टेक सम बजट. Even if you're doing it via phone, your friends or whatever, even if you have no budget required, still keep a budget of at least 3,000. खाने के लिए, ट्रैवल के लिए. लगता है भाई हम लोग 30,000 का बजट लेते हैं, 40-45 चला जाता है ट्रैवल, खाने, सब छोटे छोटे चीजों में. पता भी नहीं चलता है. So yeah, that's that. सो यू हैव, मेरे ध्यान में मैंने 3 लिखे थे अपने फ़ोन में. हक है ना मेरा फेवरेट है, उसके बाद मौत एंड आत्मनिर्भर. तो आत्मनिर्भर तो मैंने पूरा नहीं सुना, बट मौत तो अभी रिसेंटली आया है ना. सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड मौत? मौत. मौत कहाँ से आया, कैसे आया? एक दिन, वो कहते हैं ना, कुछ गाने आपके पास आते हैं, कुछ गाने आप लिखते हो. ये ऐसे 2 गाने हो गए आपके पास जो आए हैं. हाँ, एक नहीं, 3 है. तीसरा भी है? जाना ना एक था, ओके. हक है ना दूसरा था, और मौत तीसरा था. हम्म. एंड आई थिंक ये इनिशियल सॉन्ग्स ऐसे ज्यादातर है जो मेरे पास आए, बिकॉज कब लिखे थे भाई, 2009-2010 में लिखे थे. वो गाने लिखने के बाद बस पढ़े थे. अब जब वो नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग रियल लाइफ में बन के आया है, तो द कनेक्टिविटी दैट आई हैव विद इट इज डिफरेंट. मौत का एक अलग सीन है. मौत का सीन ये है कि आई वाज सिटिंग वन डे एंड I have mood swings, a lot of mood swings. And being an artist, most of the artists have mood swings. ठीक है. एंड मेरा कुछ ज्यादा ही है, मेरा अलग सीन है वो. ठीक है. तो you're sitting there and you start feeling alone. And when you have a fight with your own parents about something that you're doing, or your friends and everyone, instead of supporting you कि करो, थोड़ा बेटर हो सकता है बट करो, instead of saying that, they keep saying ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. अरे तुमको डिटेल नहीं पता है, टेक्निकलिटी नहीं पता है, तुमको उसके पीछे का सीन नहीं मालूम है. ओनली बिकॉज यू आर ऑडियंस तुम लोग कुछ भी ओपिनियन दोगे और हम लोग को मानने का है, पागल समझ के रखा है क्या? एंड when your own parents who support you at that time, but at the same time are like, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है, ये वो, somewhere inside, the artist feels like he's dying. You try and revive that artist back and धक्का मार के खड़ा करते हो, but वो आर्टिस्ट के पीछे जो तुम ऐसे पकड़ के रखते हो, कब तक रखोगे, कितने लोग का दबाव झेलोगे? becomes too much. And Moth is a track which represents death. Not the death that people perceive as in कोई मर गया टाइप, but the death as in जो हम लोग, सभी लोग दुनिया में, सभी लोग कहते हैं they are doing something artistic or not. Everyone is an artist. A doctor is an artist. An engineer is an artist. A artist is an artist. Everyone is an artist. सबका अपना अपना सीन है. Now, if that person is doing something out of passion and someone is demotivating him, right? And trying, उसके माइंड में the person who's demotivating is like, मैं इसको मोटिवेट कर रहा है बेटर करने के लिए. नहीं, that's not how it works. You are killing an artist without even knowing that you are killing that artist. It is the small things because of which that artist is dying. And it's not funny. It's painful. It's horrible. It's worse than death. Because मौत एक बार आएगी, तुम मर गए हो यार, उसके बाद कुछ नहीं है. But for an artist, you're dying on a daily dosage of multiple people just scrutinizing you. And every day the same thing for years. It's not one shot that you're dead. You have to live with that. And then you have to motivate yourself to write something out of that or create something creative out of that and keep hustling. And even after years of those hustle, when people don't respect it,
व्हाई एम आई डूइंग इट वाला क्वेश्चन आ जाता है किसी के भी दिमाग में, सीधा बात है। सो तो all these things that you're telling is what you felt in 2008-9 में ही शुरू हो गया था ये सब? हाँ, because it's like, for me, I have been a person who's very observant. It's not only about the artist, but I had one question in my mind which I never got an answer to, and no one could answer me about it. यार, आदिवासी के टाइम से जब स्टोन पेपर सीजर था, सीजर नहीं था, स्टोन पेपर था, ठीक है, तो फायर भी नहीं था यार उस टाइम पे। उस टाइम से इंसान का तीन चीजें बेसिक नेसेसिटी है: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तब से लेके आज तक इतने सेंचुरीज हो गए, हम लोग इतना डेवलप हो गए, आज भी लोग मर रहे हैं किस चीज की वजह से? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। what are we doing? If this is evolution, I think we screwed up somewhere. Like, अगर तुम बाकी चीजें तो छोड़ो, जो अच्छा हो रहा है ठीक है भाई, बट जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी वजह से ही लोग मर रहे। who's to be blamed? Who's at fault? Is it the society, or is it individual people's mentality? Who do I blame? As a child who has just been born and needs to be in a society and observe all this, I don't know what to think. And plus, being an artist, you become even more observant. Then, not only others' pain, you're even looking at your pain. And you have to look at it, because if you don't look at it, who will look at it? तो रॉकस्टार मूवी में एक बात उसने बोली थी कि गाना सिर्फ टूटे हुए दिल से ही निकलता है. इज इट ट्रू? I would say art, it's not only about song, it's about art. Art. Art can be in any form, but behind every art, there is an artist, and behind every motivation of that artist is a strong emotion. It can be love for someone, it can be the feeling of emptiness, it can be a broken, empty feeling, or it can be an anger towards multiple things. It can be any emotion. It's not specifically टूटे हुए दिल से। जब गाने की बात आती है तो वो कहते हैं ना कि आप एक बेटर शायर, एक बेटर लिरिसिस्ट, एक बेटर सुर में गाने वाला तब बनते हो जब यहाँ दर्द होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप रिकॉर्डिंग बूथ में जाते हो, इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, नॉर्मली क्या होता है, रैपर्स ना यहाँ से गाते, जो गलत है। तुम यहाँ से नहीं गाने वाले, दैट्स नॉट हाउ इट इज। यू विल ऑलवेज स्क्रू अप द रिकॉर्डिंग, सपोज टू कम फ्रॉम हियर, दैट्स वे। अगर यहाँ से आएगा तो या there's a difference in vocal tonality, and that gives a difference on the mic, which is again interpreted in a different way on software. जब दिल टूटता है ना, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका गला क्या है, फिर आप बस खुल के गाते हो, तो आपका पेट से जो आवाज निकलता है, अंदर से जो आता है, एंड बिकॉज यू आर इन पेन, द डीप texture of a song which should go like or which should go like you'll catch that. If you can't catch that in excitement, वो नहीं होता है, बट जब दर्द में होते हो वो चीजें आपको नोटिस आती है। इट्स द सेम लॉजिक बिहाइंड हियरिंग अ सॉन्ग, एंड जब दिल टूटता है तो उसका मतलब समझ में आना, वही 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 डिफरेंस है बेसिकली। देन व्हाट अबाउट हकेना? हकेना दे Okay, I'll be honest. Hakena was just a kids track. Hakena was like I wrote it in 2008, and I didn't know I'm gonna rap that track. I just wanted to create a commercial banger, and I was inspired by the Bollywood structure songs, which is basically hook verse hook verse hook. ठीक है, and मेरे को ऐसे ही कुछ निकालना था, तो मैं ना मुंबई मिस कर रहा था। मैं बैंगलोर में था, एंड आई वाज राइटिंग दैट इन व्हेन आई वाज इन स्कूल इन 11th, एंड ये हो रहा है नहीं 11th में नहीं, सॉरी, आई वाज इन 10th इन सिलीगुड़ी, माय बैड, 9th या 10th में था मैं, एंड आई वाज राइटिंग, एंड लिखते लिखते ना मेरे को मुंबई की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो मेरा घर है मेरे लिए। तो आई विल नेवर फील कंफर्टेबल एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट मुंबई। एंड मेरे को दोस्तों की कॉल आते थे, तो क्या बड्डा है, क्या सीन, बच्ची बोल रहा है यार, बहुत मिस कर रहे थे। वहां पे लोग ऐसे ही बात करते हैं? नॉर्मल लोग भी ऐसी ही बात करते हैं कि सिर्फ रैपर से बात? नहीं नहीं, ऑब्वियसली व्हेन यू गो इन ऑफिस एंड ऑल दैट, नॉट ऑफिस, अभी जैसे दोस्त लोग हाँ दोस्त लोग वही वही ऐसी सीन बात है। ऐसी बात करते हैं. तो इट्स लाइक यू सी अ फ्रेंड गोइंग,
लाइक ये बंटा है सुनना, मेरे लिए तो सीगी लेके आना ब्रो, क्या सीन, अरे भाई। इवन व्हेन यू पिक अप द कॉल वी डोंट से हेलो, लाइक हाँ बंटा है क्या सीन, तो यू रिस्पॉन्ड टू दैट। अरे मेरे को इतना आदत हो गया ना, अभी कोई फोन करता है ना हेलो बोलना पड़ता है, मेरे को सोचना पड़ता है, वरना हाँ क्या सीन तो बोलता है, क्या क्या सीन लोगों को नहीं समझ में आता है डूड। इवन इन द कम्युनिटी, वी हैव अ कम्युनिटी विच इज पैन इंडिया, so a lot of people from different places like Kashi and other places, they end up texting me, and when they say something good about me, पहला तो मेरे को तारीफ लेने नहीं आता भाई, I am very bad with compliments। कोई compliment करता है ना, मैं मेरे को पता नहीं रिएक्ट कैसे करना है। सो आई एम लाइक अरे ब्रो बस क्या, ठीक है। तो बोलता है ब्रो बस क्या, अभी अभी तो बोला, वापस बोलता हूँ तो वापस कॉपी पेस्ट करता है। मैं बोला नहीं ब्रो बस क्या, फिर मेरे को बिठा के समझाना पड़ता है बस क्या मतलब, ऐसे ही बस थोड़ी ना करना होगा, यार, ठीक है हाँ अभी हो हाँ गया। चलता है करके, वैसा वाला सीन है। सो दैट हैपेंस, एंड Hakena was written in that childish, zone wherein I just wanted to be like, I wanted to be a rock metal kind of and I could hear metal guitars in my head and like ठीक है, and I could imagine whenever I think of a song which comes to me, I imagine myself on stage random, ठीक है। So at that age I could see a smaller Prateet on stage singing Hakena, 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 and पीछे दो metal guitarists ऐसा headbang कर रहे हैं। So it was crazy at that moment in my head। आई थिंक ये अभी रिसेंटली पूरा हुआ है ना? हाँ so at that time I had written it, and उसके बाद में the song when we sat to create it, I was fortunate enough that the producer I sat with, भाई उसको हिंदी नहीं समझती, उसको हिंदी नहीं समझती, उसको लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे, अब वो कैसे जस्टिस करेगा मैं सोच रहा हूँ। बट व्हेन आई हर्ड हिज म्यूजिक देन आई अंडरस्टूड कि इसका फोटे कहीं ना कहीं रैप तो है, बट रैप में मेटल जॉनरा ये कर चुका है, सो ही विल बी एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ बीट। जब बीट बन के आया मेरे को मजा नहीं आया सच्ची बोलूं, ठीक है, कि बीट कुछ और ही बन के आया था। तो मैं बोला ब्रो नहीं नहीं। तो रिकॉर्डिंग कैसे होता है कि पहले आप गाना गा देते हो, फिर वो उस पे म्यूजिक चढ़ाता है, कि साइमल्टेनियसली होता है? सी देर इज टू वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। देर इज इफ यू हैव अ प्री रिटन सॉन्ग जो आपने पहले लिख लिया है, पर आपको पता नहीं उस पर क्या बीट चढ़ाना है, तो आप गाना पहले लिख लेते हो, फिर एक रफ रिकॉर्डिंग करते हो, वो रफ रिकॉर्डिंग आप प्रोड्यूसर को भेजते हो, प्रोड्यूसर उसके हिसाब से बीट बनाता है। जैसे लिल वेन का होता है, स्नूप डॉग का होता है, काफी सॉन्ग्स हुए, बिकॉज वो लोग आते हैं वन टेक अपना फ्री वर्स करके निकल लेते, उसके बाद में प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है यहाँ मैं क्या डालू कैसे डालू, वो उसका टेंशन है। सो आई डू इट द सेकेंड वे, इन दैट वे मैं पहले बीट बना लेता हूँ एंड फिर मैं लिखता हूँ उस पर, ठीक है। अगर पहले से लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इफ आई हैव रिटन इट प्रायर, मैं दिमाग में सोच के चल रहा हूँ कि ये गाने का मेरे को कैसे चाहिए, ठीक है। एंड इवन इफ यू सी माई नोट्स राइट, मेरे को याद नहीं रहता बाद में इसका बीट कैसा था, तो अगर 5 साल बाद वो चिट खुल रहा है मेरे को पता नहीं, मैंने जो भी लाइन लिखा है ना उसके बाद मैंने स्केल का ऐसे ऐसे करके मार्क करके रखा है, तो मेरे को फिर सोचना पड़ता है उस टाइम कैसा था? हाँ फिर बाद में ई करते करते मेरे को फिर पूरा वाइब आता है कि अच्छा द फर्स्ट लाइन इज लाइक दिस समथिंग, एंड दैट्स हाउ आई एंड अप राइटिंग। एंड प्रोड्यूसर के घर पे गया हूँ, हम लोग बैठे हैं, पूरा रिकॉर्ड किया है, एंड मैं उसको बता रहा हूँ कि नहीं यहाँ ये चाहिए वहां वो चाहिए। सो दैट्स दैट। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई हैव दिस क्वेश्चन जो मैंने भी एक एक्चुअली एक पॉडकास्ट से उठाया है, बट आई रियली लव दैट क्वेश्चन कि इफ गिवन अ बिलबोर्ड टू यू which the whole world can see, what will you write? आई राइट माई मोटो, Then explain your motto to people. हसल क्रिएट सेलिब्रेट। Break it down to us in 2 sentences. So first of all, people understand hustle, and hustle is an important part of life. Whoever is seeing this podcast, if you feel low, if you feel like ये मेरा सबसे खराब टाइम है, मेरे को खुद को मार देना चाहिए, या ऐसा कोई थॉट आता है, don't try doing something drastic. Try creating something out of your hustle. The pain, the anger, the emotion, whatever you have gone through, create something out of it. And when you create something now, do whatever you want to do with it, publish it, whatever. Learn to celebrate after it.
इवन इफ नो वन सेलिब्रेटिंग, अकेले कमरे में खुद दारू पी के नाचो चाहिए तो, बट लर्न टू एंजॉय, लर्न टू सेलिब्रेट, बिकॉज वो जो दर्द होता है ना, इट्स मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जब तुम अपने लाइफ का वेस्ट लेके उसको कुछ बनाते हो और फिर उस पर सेलिब्रेट करते हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। It's a victory over the sad part. इट जस्ट फील्स ब्यूटिफुल। इट फील्स लाइक, यार ये तो मेरे लाइफ में था ही नहीं, यही तो मिसिंग था, मैं इसका कुछ कर लिया, मैंने बना लिया कुछ। सो या दैट्स दैट। Thank you so much for coming. Apart from the podcast, we have spoken a lot. Yeah. Sorry, guys, we couldn't record that. But yeah, I was amazed by the amount of knowledge he has in different kinds of sector. I think I'll call him for another spiritual talk, another Shiva conversation. But thank you so much for listening. Any last words, and we'll close it out. नो लास्ट वर्ड्स होमीज। मुंबई 64 क्या बोलते हैं, ग्रे एंड एड ऑन योर साइड विद पीयूष, एंड क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट। तो सिर के अंदर जो खुजली है ना, मिटनी नहीं चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग विच आई ऑलवेज फॉलो, सबकी सुनो, करो अपनी। तो सुननी सबकी चाहिए, पता नहीं कौन कब क्या बोल जाए जो काम आ जाए, बट एंड ऑफ द डे करो वही जो दिल कहता है। यार दिल थोड़ा येड़ा है, तो हमेशा सही बात कहता है।